Good evening. Samak, I will send you a ghost. Okay, yes. Yeah. Samak, you start. I'm having a roll. So it will take 2-3 minutes. Hello? Yes, sir. Yeah. Yeah. Good evening. Actually, आज the market was driven by mainly news of HDFC Bank and HDFC Limited, which were down around 5 to 6% nearly. And उनकी वजह से बैंक निफ्टी dragged itself by 1,000 points. एक तो वो था, plus volumes were very high this time around because last 8 weeks से हम जो देख रहे थे, volumes were just drying up like anything. So I will see a continuation, though abhi SGX Nifty is somewhat around 40-50 points up, but whatever be it, on Monday morning, I suggest, I think that जो भी uptrend रहेगा, जो भी, it will fizzle out in few hours, यानी 1 या 2 घंटे के अंदर, it will move down again, because जिस तरह से volume built up हुआ है आज के दिन में, तो थोड़ा मेरे को लग रहा है दिस विल बी अ कंटिन्यूइंग पैटर्न फॉर द नेक्स्ट होल वीक. रेस्ट मार्केट इज सुप्रीम, जो भी होगा देखेंगे, बट वॉल्यूम्स वेर सपोर्टिंग द डाउनवर्ड मूवमेंट. शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि इट विल बी रिकवर्ड विद इन द नेक्स्ट 1 आवर, बट जो बिग बॉयज थे उन्होंने उनका जो एवरेज था भाव वहां पर लेके आए ऊपर, बाद में उन्होंने ही शॉर्ट कर दिया था मार्केट को. सो दिस वाज द thing. Second thing which is evident right now is gold is cooling off. बट मेरे को नहीं लग रहा है कि ये $2,000 के नीचे जा सकता है अभी इन द शॉर्ट टर्म. उसके सामने विक्स ये बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई है, पेट्रोल क्रूड इज आल्सो अप, बट दिस आर ऑल जस्ट डेड कैट बाउंस जो लग रहा है अभी. मंडे थोड़ा कंटिन्यूस रह सकता है यूएस मार्केट में, बट इन द शॉर्ट टर्म इंडिया जो अभी तक मैच नहीं कर रहा था यूएस के साथ, तो वो भी मैचिंग चालू हो गया है वापस, क्योंकि वो 2-3 दिन से डाउन था, बट वी आर नॉट जस्ट मूविंग डाउन, वी आर जस्ट मूविंग अप एंड अप विदाउट वॉल्यूम्स. देखते मार्केट क्या करता है, बट ओवरऑल जो भी लार्ज कैप्स है वहां पर मेरे को लग रहा है जहां पर ब्रेकआउट आ रहा है वहां से वापस ब्रेकडाउन चालू हो जाता है, जिससे एचडीएफसी बैंक में 3-4% अप था यस्टरडे, आज वापस वो 5-6% डाउन रहा. तो जहां पर भी ब्रेकआउट दिखता है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, जहां पर भी ब्रेकआउट दिखता है ऊपर ऊपर एरो सब ट्विटर पे आ जाते हैं और टीवी न्यूज चैनल वाले भी आ जाते हैं, वहां पर थोड़ा कॉशियस रहना. वॉट एवर यू वॉन्ट, यानी अगर आप लॉन्ग भी रहना चाहते हो तो भी पुट लेके जाना, तो क्या है, द लॉस कैन बी कवर्ड समवॉट इफ देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अगेन. बाकी साइड काउंटर्स में जो भी ब्रेकआउट था, तो अभी मेरे को लग रहा है वहां पर भी सेलिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज वापस देयर विल बी सेलिंग सीन. प्लस आईटी काउंटर्स में भी सेलिंग दिखा था लास्ट 2-3 दिन से. ओनली सेक्टर विच वाज हैंगिंग अराउंड वाज रेलवेज के स्टॉक्स अभी भी अप थे. बाकी पीएसयू बास्केट था वो भी थोड़ा बहुत रेजिलिएंट था, एंड 2-3 ये केमिकल सेक्टर में देयर वाज अ सेल ऑफ. बाकी कोई कई जगह पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है ओवरऑल इफ यू सी द मार्केट. रेस्ट वी विल सी सर. बस दैट्स इट सर. अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है, तो ये दे कैन कम अप एज अ स्पीकर. आई हैव सेंट अ रिक्वेस्ट टू श्रीनी सर. सचिन को भी मैंने भेजा है रिक्वेस्ट. सचिन सलूजा. बाकी एक चीज ये थी कि एवरीवन इज सेइंग कि देयर आर स्टॉक्स व्हिच कैन नॉट बी यानी मूव डाउन. तो अभी जो रेल टेल है या ये अपना आईआरसीटीसी नहीं, बट आरवीएनएल है, थोड़ा बहुत करेक्शन उसमें भी आ सकता है इन द शॉर्ट टर्म. तो बिफोर गोइंग लॉन्ग प्लीज स्टे कॉशियस. या सचिन जी.
हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शरद जी। एम आई ऑडिबल? या सर नमस्ते, मैं गौरव बात कर रहा हूँ सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए गौरव जी। सर जी, ये जो स्पेस ये जो कंडक्ट कराया जा रहा है, ये पोजिशनल के बारे में है या एफएनओ भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? ओनली एफएनओ। अच्छा, एफएनओ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, बाकी शरद सर का जो टॉपिक है पी रेशियो, वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगा हाउ टू गेज कंपनीज। ओके ओके Yeah. सर, मुझे आपको कुछ पूछना था क्या? हाँ पूछना था सर, थोड़ा पहले बताना चाहता हूँ सर मैं मेरे विषय में। या लगभग सर 2 से 2.5 साल से हो गए मुझे सर इसमें काम करते हुए, और बहुत बड़ा लॉस हो गया सर। तो किसको फॉलो करते थे? डू यू हैव एनी स्ट्रेटजी टू डू दिस थिंग, और आप किसी को फॉलो करते थे, किसी का कोर्स लिया था, नहीं, क्या किया कोर्स था? तो मैंने सर किसी का नहीं लिया था, कोर्स तो किसी का नहीं खरीदा मैंने। लेकिन सर यही टेलीग्राम पे कॉल आ रही है, कोई ट्विटर पे कुछ शेयर कर दे रहा है कुछ भी, तो मतलब थोड़ा बहुत खुद भी सीखा था। लेकिन सर कुल मिला जुला के मैंने तो सर यही देखा है कि इसमें मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी। सर कितना लॉस हुआ वो बताओ ना मेरी तो यार। आवाज मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इसमें एक टाइम कितना ऐसा लॉस आता है, हुआ? एक टाइम ऐसा आता है कि कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता अरे रहा भाई साहब, कितना लॉस हुआ आपको? कितना लॉस हुआ हूँ। आपको? लॉस सर मैं लगभग सर 4 से 5 लाख रुपए तो गंवा चुका हूँ सर इसमें। तो ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, बड़ी बात तो ये तो सब्जेक्टिव है ना सर, अब किसी के लिए तो बहुत ज्यादा है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा लॉस रिकवर कराओ। मैं एक जनरल जो मैंने जो सीखा है कि सर यहाँ पे जैसे हम लोग स्ट्रेटेजी और आपने कुछ नहीं सीखा है। अगर आप सीखे होते तो लॉस ही नहीं होता ना नहीं, भाई। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ सर। ठीक है, क्योंकि मत कीजिए। मैं नहीं मानता सर इस मार्केट में ऐसा कोई बंदा है जिसका लॉस नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई है तो आप शेयर करो अपना जो है पीएनएल स्टेटमेंट, और मैं अपना शेयर करता हूँ सर। अरे तुम काहे को चैलेंज के मोड पे आ जाते हो? सर मैंने सर सर कहा सर 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 आई हैव रिमूव्ड हिम। एक्चुअली पूरा टॉपिक आउट ऑफ वे था, इट वाज जस्ट समथिंग पर्सनल, वो कुछ नहीं था। हाँ सचिन जी बोलिए, सचिन सलूजा जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शरद गुड सर, इवनिंग, गुड इवनिंग। कुमार भाई, कैसे हैं सर? मजे में। आप बोलो सर। तो सर बैंक निफ्टी तो वीक लग रहा है काफी। मैंने आज ट्वीट भी किया था लाइव मार्केट में कि पिछले 25 दिन से इसने अपने पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, पिछले 25 ट्रेडिंग डेज में, मतलब ऑलमोस्ट 5 वीक्स। तो आज फाइनली हमें पिछले ट्रेडिंग डे क्या 4-5 दिन के लो के नीचे एक साथ ही दिया है क्लोज। तो 5,000 पॉइंट रफली हम चले हैं बैंक निफ्टी में पिछले 7-8 हफ्तों में। तो उसका 40%, 38% ऑलमोस्ट 1,900 पॉइंट बनता है, जो कि 42,000 के अराउंड तो मेरे हिसाब से एक बार आना चाहिए, 41,800 एग्जैक्टली। तो देखो अगले हफ्ते में मेरे हिसाब से आना चाहिए 43,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या होगा सचिन जी? 43,000, राइट राइट राइट, ओके। 43,080 बेसिस, 80 क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग, हाँ। मतलब अगर इंट्राडे चला जाता है लाइक 70-80 पॉइंट उसके ऊपर चला जाता है, तो आई विल टेक द स्टॉप लॉस, बिकॉज मेरी पोजीशन उस हिसाब से है कि 43,000 तक आई एम सेफ। सो उसके ऊपर आई विल बुक आउट द लॉस एंड। अरे सचिन, ये तो बता कितना नफा होगा? सर नफा तो क्या पोजीशन लेंगे उसके बेस पे है ना, मेरी तो कॉल ने बिकी हुई है। नहीं, आपकी पोजीशन में कितना नफा होगा? मेरी पोजीशन में सर अभी 50% आज मैंने बुक, मतलब आ गया, 50% बचा है। मतलब मैंने इन द मनी कॉल्स बेची थी, तो 43,000 की बेची थी तब, वो इन द मनी थी 42,500 की, अभी बिकी हुई है। तो थोड़ा नफा बेच देना भाई, प्यार मोहब्बत में। जरूर सर, जरूर। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी है ना, 17,000 हो जाएगा, देख लेना। If I take the valuations world over,
ये आपको चौकन्ना लगेगा, आप गाली दोगे, पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वैल्यूएशन करते हो तो ये 17,000 आना है, अपन आएगा नहीं, बट तैयार रहना भाई लोग। आप परेश भाई और बोलो, परेश भाई बोलो। ना साहेब, हेलो सर, कुछ तो बोलो, परफेक्ट कुछ टॉपिक, तो बोलो। परफेक्ट टॉपिक, प्लीज कैरी ऑन। परफेक्ट टॉपिक, प्लीज कैरी ऑन। ओके, few days ago, few days नहीं, वो कुछ 12-13 अप्रैल को इन्फोसिस में हुआ, 700-800 करोड़ रुपया लग गया मार्क टू मार्केट एक दिन में। आज HDFC बैंक में लगा 900 करोड़, ऐसा सब लगना चालू हो गया है और बाजार में डेंट होना चालू हो गया है। ये जब मर्जर का अनाउंसमेंट आया था HDFC का, तो बोले थे कि बिकवाली आएगी, तो 1250 हो गया था। फिर वो पता नहीं, इंडिया में तो चक्री चलता है, और बाइंग आएगी, 1350 हुआ, बोले 10,000 की बाइंग आएगी, 1450 हुआ तो बोला 20,000 की बाइंग, ऐसा करके मैं 40,000 का बाइंग फिगर सुना। तो इंडिया का मार्केट ऐसा है, फंडामेंटल पे नहीं चलता है, हेयरसे पे चलता है। अभी 1250 वाला 1730 हुआ, क्यों हुआ? बोले बाइंग आने वाला है, चलो ठीक है, अग्रीड। अभी बोलते 100-200 मिलियन का सेलिंग आएगा, 100 रुपया घट गया। तो ऐसा कौन सा शेयर है कि जो बाइंग सेलिंग ऑफ FII से इतना चेंज होता है? इट्स नॉनसेंसिकल। आप लोग को उल्लू बनाया जा रहा है। इन स्टॉक मार्केट में मैं भी कर चुका हूँ। मास हिस्टेरिया, मास हिप्नोसिस, ये सब होता है। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बात चला दो, किसी को बोलना मत, एक बात बोलता हूँ, ऐसा करके बोला तो सब शुरू। रूमर्स, ये बच्चे लोग कुछ रूमर नहीं चलाते। मैं भी रूमर चलाता था, बहुत बड़ा बड़ा रूमर वो चलाता था मैं, और पकड़ा जाता था चेन्नई से कोई बैंक के बारे में, ऐसा सब। तो आप लोग है ना, स्ट्रॉन्ग दिमाग रख के आप अपना दिमाग रखना, बहकावे में मत आ जाना। ये समझ भाई बोला RVNL घट जाएगा, घट सकता है, लेकिन मार्केट कैप ही इतना छोटा है, घटेगा तो क्या घटेगा, वो 100 रुपया होएगा, फिर वो 200 हो जाएगा, फिर वो 300। सी, ये पूरा गेम जो है ना मार्केट कैप का है, इट इज नथिंग एल्स। तो HDFC बैंक कोविड के टाइम पे 800 हुआ था, अब 1730 हुआ। वो HDFC बड़ा वाला 2900 हुआ, 2100 हुआ या 2000 हुआ, अभी वापस 2800 के सर। तो मोटा मोटी
आप लोग को उल्लू बनाया जा रहा है। बेचना मत है HDFC, लाइफ लॉन्ग रखना। अरे लाइफ लॉन्ग रखेगा उड़ जाएगा तू। 9 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट, आप समझते हो ये क्या है? 9 समझो 10 करोड़ है जस्ट फॉर कैलकुलेशन से, तो 16,000 करोड़ वायदे में खड़ा है। अभी 16,000 करोड़ को अनवाइंड करने के लिए कितना रुपया जाएगा वो मुझे मालूम है। और ये क्या होता है, जब शेयर गिरता है ना, बहुत लोग लेने को आता है, और गिरता है और लोग लेते हैं, फिर और गिरता है तो वो जो लिया है वो भी बेचने को आ जाता है। तो वो जो फॉल होता है वो बहुत खराब होता है। ओके, एनीवे, आज का जो है पी रेशियो, आप लोग वर्ल्ड का बेहतरीन में बेहतरीन मार्केट है नास्डैक अमेरिका का, डाउ जोन्स, S&P, उसको स्टैंडर्ड मान लो और 25% ऐड कर लो कि भाई अपने इंडिया है, वी आर द ग्रेटेस्ट, और अपने वहाँ सब कुछ है, राम है, ये वो है, लीडर अच्छा है, ना ये ना वो, और 300 ट्रिलियन का या जो भी है, ये अपना नॉमिनल GDP है, अपना मार्केट कैप है 275। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ, डाबर मैं देखता था 200 रुपये से, और बराबर याद है 250 रुपये का भाव हुआ था। एक रिजल्ट मैंने देखा था, अभी जो रिजल्ट आया उससे अच्छा था। ओके, so what has happened is we have expanded the PE. Earnings have not grown at all. They have gone down. Now, I think Dabur is quoting at 90 or 100 PE. अभी अगर किसी को 90 या 100 के PE में लेना है, इसका मतलब ये है कि वो 100 साल इंतजार करेगा अपना इन्वेस्टमेंट रिकूप करने को। अरे भाई, क्यों इतना लंबा चौड़ा आप लेते हो? अगर आप ये पैसा FD में रख देते हो या बॉन्ड में रख देते हो, तो 100 साल में कितना पैसा हो जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। I don't know whether I'm making sense, but the point is we are paying too much for nothing. We are paying for antique value, कि बाजार में माल नहीं है इसके लिए लेते जाओ। लेकिन ये बाजार की खासियत एक है कि माल होता ही नहीं है, सब लोग पीछे 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 दौड़ते हैं। अचानक क्या होता है, इतना माल आ जाता है कि तुम डूब जाते हो। ये जो पी का बात है, तो ये बैंकिंग का पी क्यों इतना होना चाहिए? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बैंकिंग इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। और पैसा लो और पैसा दो, एक स्क्रू बीच में से निकल गया तो अमेरिका में कितना बैंक उठ गया? क्यों उठ गया? और बड़ा बड़ा बैंक, SVB, फिर फर्स्ट रिपब्लिकन, और भी कितने हैं। आपने HDFC बैंक से बड़े बड़े उड़ गए।
तो क्या हुआ और क्यों हुआ? Because it's a funny business. Take for example Apple or Microsoft. It is a sustainable business. उनका पी देखो, माइक्रोसॉफ्ट का फॉरवर्ड 27 पी का है। कितना 27? उसमें आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है। एप्पल का ले लो फॉरवर्ड 19 का पी, तो अपने वहां पे 21 बात का इतना अपने ऊंचा पी देते हैं फॉरवर्ड। ये 2016 के पहले नहीं, 2017 के पहले डिमोन हुआ, तब तक अपने वहां भी पी सप्रेस्ड ही था और रियलिस्टिक था। फिर डिमोन में पैसा आया म्यूचुअल फंडों में ना, और सब शुरुआत हो गई हाई पी। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हाई पी विल नॉट फेच यू anything. Only saying is go for industrials, and I'm a great fan of industrials since my childhood in stock market. You will not believe I have never bought a banking share. I feel it's stupid. Yes, I have missed out. That way I have missed out so many and I have gained so many. So no regrets. Banking is very stupid. आप लोग देख लेना in coming times, a month or two. Yeah, another thing. I was watching the ticker today evening. What I realized is, except for the big banks, all the small cap banks were down. I don't know the reason, but I can easily assume that people are getting out of small banks. And why not? Because these 4 banks or 5 banks are certified by RBI as too big to fail. Rest of them are not. So think it over. If you are invested in such nonsensical banking stocks, get out of it. Go into some recognized name which RBI says is good. Now the P ratios of MNCs are high. 40, 50, 60, 70. There are 2 reasons. First is there is no liquidity. Zero liquidity. सब लोग के पास है, वो लोग पकड़ के रखता है, कोई बेचता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। एबीबी 1000 होएगा तो भी नहीं बेचेगा, और एबीबी 10,000 होएगा तो भी नहीं बेचेगा। Yesterday I short sold ABB, a huge number. उतना तो डिलीवरी भी नहीं हुआ, but it never came down. And today also it was up by 60-70 rupees. The point is, वो ठीक है, मैं कॉल पुट में निकाल लूंगा, and I have delivery also. But the point is there is no float. Now float नहीं है, आप कुछ भी भाव बना दो, and you will always say P ऊंचा है, मैं नहीं लूंगा। ये सिलसिला मेरे जाने के बाद में, आपके जाने के बाद में भी चलता रहेगा। MNCs will be always very expensive because no significant quantity is available for sale. Today Samad Bhai told me that GTND was up by $40.
मेरिट है कि नहीं है, वो जाएगा ऊपर। आरवीएनएल में मेरिट है कि नहीं है, वो जाएगा ऊपर। द होल गेम इज अबाउट फ्लोटिंग. So the first point is floating. Secondly, it is about the management. I blindly presume that all MNC's management is good. Now, this is untrue. But it is untrue by 10%. 90% is right. I'll give you an example of a Japanese company called Rico India. Now, that was a total fraud. Total fraud. And I had seen and understood it is a fraud. So I got out at 800. But thereafter it went up to 1200. बट ये ऐसा फ्रॉड बहुत रेयर होता है, उसको सच मत मानो. इंडियन कंपनी में लार्सन, आप लिख के रखो, इंडिया में 3% ग्रोथ होएगा ना, 3%, ये 5-6 हजार का भाव हो जाएगा. बाकी सब तो ठीक है, वो कोई अच्छा कंपनी होगा, आप लोग को ज्यादा मालूम, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आई डोंट फॉलो एनी कंपनीज. एंड देयर आर many good companies which I don't follow, but they are there. One of them was Anup Engineers. I think it will be a see, like this. There are many stocks which you should have there, but unfortunately, what you have is Kotak Bank, A Bank, A Liver. What, yeah, what for? So another thing about P ratios is about commodity. Now, with the present situation, I think commodity stocks, Tisco, Tata Steel might come down to 80 rupees, but this JSW and all, they will go down to 20%. Such is the horrible market in commodities. The index of international commodities is very bad. So the PE of metal is very high over here. It should get compressed a lot. Textiles, it is the largest sector in India, but you won't find any good companies except Vardhaman or Gokex and all that. But there is no charm in that. And net, with HDFC Bank going down, and it will go down a lot. I think I am not putting a number because you assholes, you really bug me when I say 12,000. It's just a number, but what about your portfolio? Okay, anyway. So this whole issue about Nifty, believe me, it's been a very long time that I have played Nifty or Bank Nifty. It is just that I am a partner with Saluja in his profits. I don't play because
It's a synthetic product. You are wasting your time, energy, and the charges are so heavy. India is the most expensive market in the world to trade. You know that? No. निफ्टी ये हो जाए, अरे हो गया 2 साल से तो एक ही लेवल पे चल रहा है, अपने किधर भागा दौड़ी किया. So please, for heaven's sake, don't talk or concentrate on Nifty because it's total waste of time. And I can tell you with great confidence, there might be few salujas whom I know makes money consistently. But otherwise, how can you make money trading every day? How? तुम algo लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ. Possible ही नहीं है. If you take more decisions, the probability of making mistakes is more. If I don't take any decision, I don't make a mistake. That's the logic. So, if you have money to spare, money to throw, money to, then play nifty options and all that. You will be great. You will have a great fun. Whole night you will be in Dow Jones, XGX. ओ बीवी बोलेगा चलो डिनर पे, बोला बोला ना 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 ना, ये मेरे निफ्टी माते ना बड़े ले. So the point is, don't waste your youth on this stupid product. ये लोग एक्सचेंज वाला ऐसा प्रोडक्ट लाएगा ही, and it is their job and the duty, but it is our job and duty not to get sucked into it. That much uh, that much we will have to control ourselves. And if you see a stock, if you see a stock or hear from somebody about a stock that the management is good and above all the product is good, don't ever think about P. Just buy it, because P is is a historical item. It's not current. What I see, okay, it's very ambitious for me to speak a long term, but with 3% growth also, all this good MNCs, engineering companies will go haywire, boss, haywire. कुछ भी भाव हो जाएगा. Reliance, I don't know. वो 1600 होएगा कि 1000 होएगा, I am not sure. But my bet would be on that. Engineering and industries where pioneer work is there, that you should find out. And one thing that I missed was, please don't look at PE. It's a misleading thing. I can, without looking at anything, I can tell you कि इसका भाव ये हो जाएगा. Why? Because of experience. होता ही है. आप लोग कितना भी माथा फोड़ी करो, शरद शाह बोलता है मीन रिवर्जन दुनिया में अस्तित्व में है. मीन रिवर्जन, अमीर होता है, गरीब होता है, अमीर होता है, गरीब होता है. मीन रिवर्जन इज 110%, and it manifests more so in the stock market.
नाउ यू विल से ये देखो ये, अरे भाई तुम देखो ना कितना कंपनी उड़ गया, 3,000 कंपनी, 4,000 कंपनी, उसका क्या। अपने एक बात समझना, वी आर हियर टू एंजॉय आवर लाइफ, वी आर हियर टू मेक गुड life for others, for the dear ones. We are not here to talk about Nifty. And picking stocks is the most easiest thing. Pick some good stocks, go to sleep. हाँ, ये मेरे लिए टाइम पास है, ये ऑप्शन ऑफ स्टॉक्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स मजा आता है, करते हैं. There is no need. At 65 or 66, I should be enjoying life, but I enjoy this more. अरे आप बंद करो भाई. हेलो, सचिन जी आवाज आ रही है शरद सर की? नहीं, मेरे को आ नहीं रही बात। हाँ, अभी आ रही है भाई. यस सर, यस सर. आप बोलो अभी. हाँ भैया. बोलो. आई सर, आई. बोलिए बोलिए, चलिए अभी मैं वो थोड़ा आराम करता हूँ. हाँ राजदीप जी. हाँ सर, सर क्या बताऊं, मतलब आप और समझ भाई इतना ओपनली ट्विटर में सब चीज दे देते हो कि कौन सा स्टॉक लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसा करना है, कैसा प्रोग्रेस करना है, ठीक है। और धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग होएगा, वो सबको मालूम है, ठीक है। बट लोग समझने का कोशिश नहीं करता है। तो इवन आई वॉज वन ऑफ द पर्सन कि पहले मतलब मैं ये यूट्यूबर्स को फॉलो करता था और आई वोंट नेम नेम्स कि मार्शलर्स मतलब जो भी है, हु इज द ओनर, बोलता था ये ले लो वो ले लो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से मैं ये स्पेसेस में आया हूँ, मेरे को मतलब आप शरद सर मतलब यू हैव गाइडेड अस सो वेल कि क्या बोलूं। अभी पी रेशियो आप जैसे द टॉपिक इज, तो मैं बोलना चाहता हूँ आई हैड पिडिलाइट जिसका 101 पी रेशियो है, आई हैव सोल्ड इट। तो मतलब सीरियसली मतलब लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और एंड यू गाइज हैव बीन गाइडिंग अस सो मच that I'm very much humble and grateful to you guys that you seriously help us in our daily lives, how to proceed with market and everything. And ये bond भाई जो है बाजू में, I don't know what to say, like words are very less, but that is all on trading. So Sharad sir, I won't say anything on that, but the hints which you give, even the Atul engineering which you have given, so it is so nice to follow you guys to understand and the market. And thank you very much. That is all I want to say. I had Pidilite for a while and I have sold it. Thank you. And that too with conviction. Thank you. ये कौन बोल रहा था? सर राजदीप समझ भाई. हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके ओके सर. थैंक यू. थैंक यू. हाँ शुभम जी, शुभम कोटकर. सर एक स्टॉक के बारे में पूछना था. हाँ जी बोलिए सर. जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, उसका बुक वैल्यू है 2400. वो होल्डिंग कंपनी है सर. ओके. होल्डिंग कंपनी का बुक वैल्यू ज्यादा ही होगा, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है इसकी. ओके
और उसका कोई मतलब पहले कुछ सेल्स नहीं था, 0-0। अभी लास्ट 3 और 4 क्वार्टर में उसका सेल्स दिख रहा है, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है क्या, ये पूछ लेना था मुझे एक बार। नहीं अरे सर परफेक्ट है ना, बराबर है ना, ये होल्डिंग कंपनी है ना। क्या मालूम, जाने दो ना यार। वो जी होल्डिंग कंपनी आप देख लेना, उसमें इन्वेस्टमेंट्स में देख लेना, रिपोर्ट में आपको दिखेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। या हाँ जी, अमिताभ सुरिंदर जी। Good evening, Sharad bhai. गुड इवनिंग, बोलिए। I just have one small data which I want to share with everyone. So, back in Manmohan Singh's 2004 government, P ratio was 18.4 and we got returns of 25%. ये मैं CAGR बता रहा हूँ. In the 2009 government, again P ratio was around 19, returns were around 10%. Now in the Modi government, 2014, P jumped up to 21.5. मार्केट रिटर्न्स ड्रॉप टू 10.4 और अभी करंट गवर्नमेंट में पी इज as high as 26. रिटर्न्स आर ओनली 8.9%. सो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है. ऐसे लग रहा है. I'll tell you. The initial point of 2004, that time the market cap was hardly anything. Okay, maybe 10 trillion rupees or 15 trillion rupees. So from there, say it was 10. So now it's 300. So 30 times jump. Now from here, for any jump or to become double is mathematically impossible. Not impossible, it's very very difficult. This 10 का 300 हुआ, अभी 300 का 600 नहीं होएगा जल्दी. You understand? Yes sir, yes. So and this statistics you can mold it the way you want, because Nifty, Sensex, in Nifty I think almost 30 stocks, 50 out of 50 must have changed over a period of time. So all that, I think, see, Amitabh, the best thing is how much money you make. वो दूसरे का क्यों सोचते हो? आप पैसा बनाओ ना, अच्छा स्टॉक ले, रिटर्न कैलकुलेशन वो सब दूसरे लोग के लिए छोड़ दो, आप मत करो. Concentrate. From the way you speak, I realize you have a very analytical mind. So apply that mind into picking stocks. Sure sir, sure. Just wanted to share this aspect that there is a very high sort of premium that everyone is paying just because of the current government. I mean, we are 9 years already in the government. How much more are we going to wait? You know, if the premium had to sort of offer us a reward, it would have already offered. I don't know what people are waiting for. And this also sort of puts a risk that, say, suddenly tomorrow this government changes next year. Then what is going to happen? You know, there's going to be a Yeah, I'll tell systematic you risk. what. Yeah. I fully agree with you. I presume that there is a 25% premium in the market for equities because of the present dispensation. Suppose it changes, market straight away will be down by 25%. No doubt about it. Another thing, now that you have made me talk about politics, which I normally don't do. On the 10th is the election. This 10th May. All the reports, what I read on social media,
are very bad for the present dispensation. If that comes true, then I think 400-500 points Nifty we will see a downfall in a day or two after the exit poll and the results. I told somebody that there is exit poll. Well, no, I want to wait for results. Okay. So on Saturday, results are there. What will happen thereafter? So, Amitabh, I think whatever your thoughts are matching with mine. We are paying unnecessary premium, or a better word, a P ratio for stocks. Agreed, sir. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Ramesh Tale. यस सर. सर नमस्कार सर. नमस्कार भाई. सर जैसा आपने बोला पी रेशो के बारे में कि मतलब जो एप्पल वगैरह के जो यूएस स्टॉक है वो काफी रिजनेबल पी पे मिलते हैं और हमारे इंडियन स्टॉक काफी हायर साइड में है. और जैसे फिर आपने एबीबी का एग्जांपल दिया कि वो भी हाई है और वो जनरली हाई होते हैं. तो सर उसको कैसे हम समझेंगे पी को फिर कि कौन से स्टॉक में पी हाई है तो चलेगा और कौन से स्टॉक में पी हाई मतलब वो नहीं चलेगा सर. वो थोड़ा समझाओगे सर? एक सिंपल बात है, जितना भी एमएनसी है ना. ओके सर. उसका ऊपर रहेगा. ओके. ये तो जैसे ये मारुति है. हाँ. 65 का पी है. ओके. एक्चुअली होना चाहिए 5-6 का. अच्छा. पर है. तो इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को मैं शॉर्ट मारेगा, नहीं. हाँ. जो है वो है. जब तक वो है उसको नमस्कार करो, सल्यूट मारो. ओके. जिस दिन वो जाता है उस दिन उड़ा दो उसको. ओके. तो मतलब क्या सर ये मतलब उसको एक परचेस पॉइंट का एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? किसके लिए? मारुति के लिए? नहीं मतलब ये पी को मतलब खरीदने के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए. जरूरी है वो क्राइटेरिया कि जरूरी नहीं है फिर वो? मैं क्या बोला मेरे भाषण में, तुम पी देखने बैठेगा तुम शेयर ले ही नहीं पाएगा. ओके. यस 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 यस. हाँ, फिर मिलेगा कचरा पट्टी आपके पी में. हाँ हाँ हाँ. और मैं बोलता हूँ, यस सर. इंडिया में सस्ता पी देख के लेना मत, अब पछताओगे. ओके. कभी भी मत लेना लो पी स्टॉक. और ये 2 साल अगर आप दिमाग से निकाल लो ना तो आपके लिए बहुत फायदा होगा. ऐसा बाजार नहीं होता है. अच्छा. दिस इज अ क्रेजी मार्केट. हाँ हाँ हाँ. HDFC बैंक 50,000 करोड़ का बाइंग आएगा तो 1250 से 1730 होता है. फिर बोला 100 मिलियन 200 मिलियन का सेलिंग आएगा तो एक ही दिन में 100 रुपया निकल गया. अभी ये कोई बाजार है क्या साला, इडियट के जैसा. हाँ हाँ हाँ. वन शुड स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग से फर्क क्यों पड़ना चाहिए बाजार को? सही बात है सर. ये पड़ता है बिकॉज ओवर प्राइस्ड है. ओके. ये अभी मैं एक दूसरा बात बोलता हूँ हाँ सर. कि अभी पिछले दिनों में वो उत्तर प्रदेश में वो माफिया को उड़ा दिया, आतिक को. हाँ. और भी सब उड़े इधर उधर. फिर दाऊद इब्राहिम है. वो लोग है ना अंडरवर्ल्ड है. लेकिन इतना वो छोटा आदमी है वो लोग. आप पूछो मत वो क्या लूट लेगा. 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000. हाँ हाँ.
नहीं रमेश भाई आप शांत रहना. ओके सर. ये the point is these gangsters are nothing. The real gangsters are in stock market. Big dons. One from Ahmedabad, one from Bombay. How much they have damaged India, we don't know. They wouldn't allow any new promoter to come up. They wouldn't allow any good company to succeed. So these guys are the real dons and gangsters. Not that I suggest that they should be encountered, but they should be kept in check. Yeah, sorry. बोलिए. ओके सर. थैंक यू सर. Thank you. या राजशेखर देशमुख जी. नमस्ते शरद सर. नमस्ते समाज सर. यस सर. नमस्ते सर. ये पी रेशियो का आइडियल रेंज क्या रहेगा और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और क्या क्या फैक्टर्स हम देखना पड़ेगा. और एक क्वेश्चन था आरबी इंधन के बारे में, क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए 4-5 साल के लिए. दैट्स इट सर. क्या पूछा आरबीएन? यस सर. यस सर. अच्छा रहेगा. और दूसरा सवाल क्या था? आप पी रेशियो का आइडियल रेंज क्या रहेगा और दूसरा क्या क्या फैक्टर्स देखना पड़ेगा सर स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के लिए 4-5 साल के लिए. यार अभी आपका बीवी मेरा बीवी सब डिफरेंट है ना. बराबर है सर. बराबर है. तो नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट जनरलाइज कि बीवी सर, अच्छा है कि बीवी खराब है. नहीं फिर भी सर जनरली नहीं हो सकता है. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन where I will have to write a महाभारत on P ratios. ये इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है. स्पेस में क्या होएगा? ओके सर. हाउ कैन यू जनरलाइज पी? सर और भी कुछ और फैक्टर्स क्या देखना पड़ेगा सर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए 4-5 साल के लिए. 4-5 आप प्रोडक्ट देखो बस. हाँ सर. थैंक यू. ठीक है. ये आरबीएनएल अभी भी अच्छा है सर लेने के लिए. भी बहुत दिन से भाग रहे हो उसके लिए पूछा. है क्या आपके पास? नहीं सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा था इसलिए आप. तो छोड़ो मत लो. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. चलो भाई कौन है? समझ. हाँ बोलिए. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर मैं जो पिछले 25 दिन से जो मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है सर, तो आज ही सेलिंग आई है बड़ी. तो सर पिछले 25 दिन में इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा था? अगर इसको बुल मार्केट है ही तो उसको ढंग से तो जाना चाहिए ना. जो हम पहले देखते थे, पहले अच्छे से जाता था, इतनी छोटी रेंज नहीं बनती थी कभी भी. तो ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती भगाया जा रहा है, मतलब कि ट्रैप करने के लिए रिटेलर्स को कि वो सेल करेंगे तो हम बाई करेंगे, वो इस तरह से. पता नहीं यही यार. पूछना था. ये एंगल काहे को सोचते हो यार? किस बात से सोचते? क्योंकि सर अपना मार्केट सर रिएक्ट नहीं करता अच्छी न्यूज से. जो इंडेक्स है और हमेशा अपोजिट चलता है सेंटीमेंट के. इसीलिए तो बोलता हूँ ना अपना मार्केट मैनिपुलेटेड है. बकवास मार्केट है. यूजलेस. स्टॉक पे ध्यान दो. पैसा बनेगा. बाजार पे ध्यान मत दो. थैंक यू सर. चलिए. who's that? कर्नल निर्भय कुमार.
नमस्कार शरद शाह साहब। नमस्कार। एक तो सर आपका जो नया वाला जो ये सर बहुत ही अच्छा है। Highly impressed. For a very long time I wanted to congratulate you on this new DP. मैं तो एक ही क्वेश्चन आपसे बराबर पूछता हूँ सर। What will be the level in the next expiry, sir? I can't hear you. Sir, I just wanted to know what would be the level in the next expiry, since the election results will be there, and Karnataka, as you said, things are almost coming in out. So, considering that, or whatever are your expectation, or you understand better than me. No, I understand better, but it is highly manipulated market by the government. Absolutely. So, if I opine, I won't be right. What they think will happen. But net, I should think it should correct by 300-400 points from here. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Sabyasachi. Hello, Samar sir. Sarad sir. Good evening. Good evening. मेरे पास वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं है. I just wanted to give an update. मतलब since I begin to since I heard Mr. Sarad sir, I've been accumulating all these industrials, right? And now you know what is the result of ABB, Siemens, etc. Correct? So I will emphasize what Sarad sir is telling in every space, that you accumulate good stocks irrespective of the PE ratio, valuations. You'll get rewarded someday, and definitely you'll get rewarded. So I'm thankful. Like, say for an example, I've been accumulating Ingersoll Rand, ABB, Siemens, RIM, and even Kenna Metals. Some of them have given very good returns, and some of them are just at my cost. I'm just waiting for their time to come. But you're talking nonsense. Don't ever look at it. वो डाला भूल जाओ ना यार. Why are you looking बड़ा गधा? No. I'm just giving. I know. I should not look at it. I'm just giving an objective and thanking you for your advices which you have given, and they're not. They should not be ignored. That's what I'm saying. I've never been. जी, just to interrupt, ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, you should keep it in your son or daughter's account. तो कभी आपको बेचने की जरूरत भी नहीं रहेगी. Correct, sir. समझे? You should never keep it in your account or wife's account. नहीं तो कभी भी पैसे की जरूरत रहेगी तो you will sell that stocks and have it. But ये जो है ना, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो आपको नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 इयर्स में पैसा बना के देंगे. भले आप इतना ही डालो जितना आपको अभी जरूरत नहीं है, जो आप बचा सकते हो उतना ही डालो. आप एक्सेसिव मत डालो. एक दूसरा बात है, ये जितना भी कंपनीज है ना, वर्ल्ड की बेहतरीन कंपनियों में से है. और मेरे जाने के बाद में, आपके जाने के बाद में भी ये कंपनियां रहेगी. Very true. ओके, तो इसको संभाल के रखो, पैसा बनेगा, बहुत बनेगा. Correct, sir. Correct. And honestly, I have been accumulating, and since what I thought of something I forgot, which is a good point actually. Sorry. Abhi, I think everybody would have heard the commentary of ABB, correct? Their international or parent unit, giving guidance based on what the growth they have in India. Just imagine what kind of fortunes they will make in future. Overall, all over the world, and of course in India. So thank you, sir, for your advices, and I'll keep it in mind forever. And that's all. Where are you from? Sorry, sir. Where are you from? I am from, sir, Bangalore. Okay.
You Yeah. WhatsApp me. My number is there. Yes, sir. Sure. Definitely will do that. Thank you, sir. Yeah, चल Navraj. Navraj ji. गुड इवनिंग सर। good मेरे Good evening, sir. हाँ, बोलिए सर। सर मेरे को पता करना है, जो एक सेतिया इंडस्ट्रीज के नाम से है शेयर, उसका चमनलाल क्या सेठिया। चमनलाल सेठिया सेतिया कमोडिटी में है, राइस और वो एक्सपोर्ट में है। नहीं सर, उसमें नहीं है। वो सेतिया इंडस्ट्रीज है, एक पेपर इंडस्ट्री में। साथिया इंडस्ट्रीज 120 130 का भाव है, वही ना? 130 का नहीं सर, आज 117। हाँ, तो बस वही 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 नया स्टॉक है सर। आप देख लेना, वी डोंट ट्रैक इट, क्योंकि ये मेरे मतलब मेरे है ना, मेरे एरिया में है ये इंडस्ट्री, इसका प्लांट है पंजाब में। तो अभी इसका मतलब काफी इन्होंने किया है, और काफी इनका मतलब अंडर वैल्यू शेयर है जिस हिसाब से इनकी सेल्स आती है। नवराज जी 40 रुपए का था, अभी 120 हो गया है। तो इन्होंने एक्सपेंशन किया है ना सर, पहले एक्सपेंशन नहीं अभी किया वो था। अरे रिजल्ट भाई देख के साहब, उसके बाद अरे करना जो भाई भी। साहब, हमें समझाने से क्या मिलेगा? हम जिंदगी में ये शेयर लेंगे नहीं। हमारा जो भी है सिर्फ बड़ा बड़ा नाम वाला ही हम लेता है, ब्रांडेड आइटम लेता है। ओके सर। हम ये अपने इंडियन आइटम नहीं लेते हैं। हम शर्ट पहनते हैं स्टीफन ओरिकी का, हम जूता पहनते हैं बर्लूती का, हम जीन्स पहनते हैं किटोन का। हम ये सब इंडियन नहीं लेते हैं कभी। अब मरने का क्या? और दवाई लेगा तो ग्लेक्सो और एवेंटिस का ही लेगा। ओके सर। या थैंक यू। थैंक यू सर। चलो। और सर मेरे को तो कोई स्पीकर है नहीं सर। बस आपके पास है तो ले लो। नहीं है। सभ्या जी बोलो, कुछ क्या बोलना है? नहीं, उन्होंने तो बोल लिया ना सर, सभी सच। तो वो रिक्वेस्ट दिया वापस। अच्छा, सभी साथी जी बोलिए। अरे नहीं सर, मैंने तो स्पीकर मतलब रिक्वेस्ट ऑफ कर दिया था, बट आई डोंट नो मतलब व्हाट हैज हैपेंड सर। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। हाँ सर, और एक बस अगर आपने दिया है चांस तो एक बार बोल लेता हूँ। याद है सर, तो एक स्पेस में आपने गोल्ड के बारे में बोला था। आई थिंक आई हैव टेकन नॉट फिजिकल गोल्ड ऑफ कोर्स, बट वो एसजीबी मतलब लास्ट जब लिया था ना, मतलब मेरे को पता भी नहीं था वो कैसे लेने का है। आपसे सुनकर मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेके वो जीरोधा में लिया। अभी मतलब अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही लिया होगा शायद। मतलब वो 10% अप है, ठीक है ना। और वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मैंने वो एसजीबी लिया था, सॉरी हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिया था, और 100 रुपए 102 मतलब वो 28 एक्सपायर 27 मैच्योरिटी का लिया था। अभी क्योंकि शायद बॉन्ड यील्ड पता नहीं वो आपने वो फंडा बताया था, तो वो बॉन्ड यील्ड ही मतलब शायद वो जो भी है मतलब वो अभी 3% अप है। मतलब जो सेफ इन्वेस्टमेंट आप बोलते हो ना, तो डेफिनेटली वर्क्स। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। बट मेरे पास कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, सॉरी सर इफ आई हैव रिक्वेस्टेड बाय मिस्टेक। अरे तू बात करता है, थोड़ा पैसा भेजो ना, इतना नफा हुआ तो। अरे सर हम आपसे तो सीखते हैं सर, आप गुरुदक्षिणा मांगो, हम रेडी है। नहीं, आप हमें दो, पैसा दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप पैसा मत बोलो, सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट गुरुदक्षिणा बोलो। आप जो भी बोलोगे आप देंगे, बट एटलीस्ट आप जो सिखाते हो ना, दैट इज वैल्यूलेस। नहीं, हम ठहरे अंडरवर्ल्ड। हम ऐसा ही लैंग्वेज यूज करेगा। वो कोई बोलता है दारू पीता है क्या, दारू पी के लिखता है क्या, तो हम बोलता है हाँ तेरी फैमिली के साथ पीता हूँ। फिर वो बोलता है ये विमेन का ऐसा बोल। अरे तू बोला बेवड़ा मैं हूँ,
फिर मैं कुछ भी बोलूं तो क्या हो गया? सर और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ऑनेस्टली दिस इज वेरी 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 ऑनेस्ट। मैंने सर आपने पहली बार मैं केना मेटल का नाम सुना नहीं था, ऑनेस्टली मैंने पता नहीं था कि केना मेटल जैसा कोई स्टॉक होता है, ठीक है ना। तो एक बार मैंने आपका रिकॉर्डिंग स्पेस सुन रहा था, तो उसमें आपका वॉइस कैसा होता है ना, आप अगर खुद सुनोगे ना, आप भी कभी कभी कंफ्यूज होगा आप क्या बोल रहे हो, मतलब आपको मैं थोड़ा न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो मैं भी बोला यार ये ऐसे कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं जो मेरे को पता नहीं है। तो लिटरली मैंने आई rewinded it at least 10 times to know this is something Kenna starts with Kenna, right? Then somehow I googled it and I got to know that this is Kenna metal which is there listed in Indian stock market. फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और पढ़ा कि वो है क्या, क्योंकि उस दिन आपने खाली ऐसे केना मेटल से स्टॉक लेके देखो ऐसा ही बोला था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था, मतलब हाउ व्हाट इज केना मेटल, हाउ इज केना मेटल, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, आपने कुछ नहीं बोला था वो स्पेस में। तो मैंने खुद जाके पढ़ा, फिर मैंने बोला चला ये केना मेटल तो मतलब अजीब सा चीज है, मतलब अच्छा ही चीज है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एंड इज लीडर ऑफ वट एवर दे आर डूइंग। सो मैंने उसके बाद जाके लिया। आप सोचो, आप कभी कभी रियलाइज नहीं करते हो ना, आप कुछ कुछ बोल देते हो ना, इसका बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता वो स्टॉक क्या होता है। सो दिस इज वन ऑफ माय स्टॉक, मतलब जो मेरे पोर्टफोलियो में है और अच्छे क्वांटिटी में है, आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई गॉट टू नो फ्रॉम यू एंड व्हिच आई डिडंट नो दैट दैट स्टॉक एग्जिस्ट इवन। तो सुनो, दो बात बोलता हूँ। I will take a name, okay? But why will I tell you everything about it? आप तो कुछ मेहनत करो भाई। वेरी ट्रू। और दूसरा बात है, एक स्टॉक है फोसेको करके, मालूम नहीं 2300-2500 कुछ भी होगा, वो हो जाएगा 20,000 रुपये। अरे बाप रे, मैं पढ़ता हूँ सर उसके बारे में। गुड गुड, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। या सूरज रानपुरा। गुड इवनिंग सर। शरद सर, आपसे कुछ एक्सपीरियंस आपका कोई शेयर करना हो, जैसे कि आपने प्रीवियस स्पेस में। अब थोड़ा आवाज हेलो, एम आई ऑडिबल? नो अभी आ रहा है सर आवाज थोड़ा? हैंड्स फ्री निकाल दीजिए ना। नहीं, हैंड्स फ्री नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही है। हेलो, आवे जो आवाज? हेलो सूरज भाई आवाज નથી આવતો ધીમો। एक मिनट। हेलो, चल छोड़ यार, बीजा जसप्रीत जी। Yeah, good evening, sir. शरद जी, गुड इवनिंग। समर भाई, गुड इवनिंग। श्रीनिवास जी, सर मैं आप लोग को थोड़े टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड जब भी कोई स्पेस होता है तो मैं और कोशिश करता हूँ अटेंड करने का, अगर मैं उस समय मेरे को टाइम मिलता है तो। सर अभी ये जो स्पेस हो रहा है, आपने पीई का अच्छा टॉपिक लेकर आया और आपने बताया कि कोई भी अच्छी कंपनी को बाय करने का कोई पीई देखने का ज़रूरी नहीं है। सर लेकिन एक काउंटर थॉट कभी कभी ये आता है कि सर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जैसे ओवर वैल्यूड रहती हैं और फिर भी ऊपर जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर पी को ना देखते हुए अगर किसी कंपनी को हमें ये समझना पड़े कि हमें कब कंपनी को बेचना है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो सर उसको वो कैसे पता करने का सही तरीका है? मेरा मानना है कि अगर शेयर लेते हो तो बेचने की जरूरत क्या है? Why should you sell a share? For what reason? सर अच्छे शेयर्स भी सर बहुत करेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी 30% 40% गिरते हैं, कभी कभी मार्केट खराब हो तो। खैर ऐसे तो कोई शेयर मेरे पास नहीं है, तो ये सवाल मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा यार। देखिए, the point is in stock market, whatever you like,
Okay, and if you have done some study of it, where is the need to sell? What is the need for you to sell HDFC Bank at 1400 or at 1200 or at 2000? You are holding it. That's it. So I think investment is all about holding on to whatever you have. And what you are talking about selling and all that, it tantamounts to trading. It doesn't gel with long-term investment. Thing. See, one thing, India market, I'm very bearish. I said India market. I didn't say Indian stocks or few of them. But eventually, India is a place where there will be lots and lots of growth. 3%, 4%, that's enough for India. And the concentration of power from 2, 3 promoters will create wonders for the Indian stock market. So, I do understand what you are saying that PE देख के बेचना पड़ेगा, but वो trading game हो जाता है. नो सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि पीए देख के बेचना पड़ेगा. मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम पीए को नहीं भी देखते हैं तो बेचने के लिए क्या क्राइटेरिया है? अब पैसा बन जावे तो बेच दो. If you are satisfied, ये सपोज आरवीएनएल था, अब 25 में लिया, 55 में बेच दिया, खुश हो गया, 140 हो गया, क्या करो? So these are all relative things. You cannot quantify or say ये ऐसे करने का तो ऐसा. There is no. हाँ, एक बात आते हैं, शेयर बाजार में एक बात याद रखना, there is no rule. Everything is different at different times and nothing is the same ever. So anybody who says मैं stock market में ये rule follow करता हूँ, ये करता हूँ, it's nonsense. In ever evolving, revolving and a dynamic market, you cannot have any strategy that will work all the times. So there can't be a rule. I cannot tell you कि इतना पी पे निकलो और इतना पी पे रख दो. It's really very dynamic, and I think people have written thousands and thousands of books on this topic, but nobody knows the answer. सर एक ओके सर गॉट इट. सर एक सेकंड क्वेश्चन और था कि सर पी तो वैसे थोड़ा इररेलेवेंट ही रहता हैगा बिकॉज वो इंडस्ट्री बेस भी रहता है और मतलब कुछ भी कहीं पे भी जाता है ऊपर नीचे. बट सर एक रेशियो और रहता है विच इज पेग रेशियो, प्राइस टू इक्विटी टू ग्रोथ रेशियो. सर वो थोड़ा रेलेवेंट रहता है एटलीस्ट विद इन इंडस्ट्रीज. आपको लगता है क्या सर ऐसा? नहीं, मुझे आता नहीं है. मैं तेरे को डीएम करता हूँ, सिखाना मेरे को. ओके ये ओके पैक रेशियो मेरे को नहीं मालूम है. ओके सर ठीक. सिखाएगा ना मेरे को. सर ये पेग रेशियो बेसिकली जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको पी से मोस्टली डिवाइड कर देते हैं तो वो एक फिगर आ जाता है और नॉर्मली बोलते हैं कि अगर 0.5 से कम का पेग रेशियो हो तो कंपनी में ग्रोथ का चांस बोलते हैं कि ज्यादा रहता है. बट अच्छे कंपनीज के जैसे आपने इंडस्ट्रियल्स बताए उसके 2 से ऊपर भी होता है, 3 से ऊपर भी होता है. तो सिमेंस का, एबट का ऑलरेडी 2-3 से ऊपर का पेग रेशियो है बट अभी भी जो स्टॉक्स हैं वो करेक्ट हो नहीं रहे हैं और ऊपर ही जा रहे हैं. तो सर वो भी मतलब कितना रेलेवेंट है समझता नहीं है. It is relevant because many scripts. अरे विप प्लीज. PG, I am clarifying with him. नहीं, don't clarify. You don't speak in between. This growth, PE growth, who will estimate the growth? सर नॉर्मली हर कंपनी रिजल्ट्स के टाइम पे गाइडेंस देती है कि कितना आगे फ्यूचर का वो है. सो आई बिलीव सर उसके बेसिस पे रहता है.
but 80% of the forecast is wrong. हाँ सर, वो तो सर एस्टिमेटेड ही रहता है, करेक्ट है। सीखा ना मेरे को भाई पीजे। हाँ भाई। Yeah, Vips. Now you speak. Vips. बुरा लग गया है क्या? चल, ठीक है। Who's next? Okay sir, thank you so much sir. Yeah, hello, Yeah. Sharad bhai. हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, that PEG का link I have sent you. That अरे PEG जो एक अरे मिनट तू अरे काय को बेचता है? मेरे को कैटरेक्ट है, पढ़ नहीं सकता अच्छा है। अच्छा okay. So what that boy said earlier is that the estimates which other people give, growth estimate, you factor that into the PE ratio. The lower, sorry, the PE, into the PE. So you'll get a PEG, G for growth. So the lower the PEG, the better it is. But now, if you take Siemens, okay, or ABB में अभी 7.67 है PEG, and the actual PE is higher than that. Okay, 80, 70 like that. Same thing with your ABB right now is at 91 PE, and the PEG is 7.28. Okay, like that you say supposing Siemens. Same thing for all the companies, including your Pidilite. अभी Siemens आपका है 87 का PE, and the PEG is 5.73. So that is the best among them. It's a lower PEG ratio. उसमें growth prospects are higher and face values too. Vips. हाँ. Did you believe me when I said I don't know what is PEG? No, of course you must be knowing. What you don't know, tell me. तो फिर क्या explanation देते हैं? नहीं तो that's what I'm saying, because many people get discouraged. No. Actually, that person, that boy who was saying, no, Yeah. I was very interested in him, and I Correct. wanted to get into his mind, how he thinks. He's a Okay. smart boy. Yeah. Of course, no doubt. Yeah, Neil. नील बराबर। Yeah, good evening. Good evening, sir. Good evening. Yeah. Sir, I have one question about few small cap MNCs. Okay. Maybe their business today in India is very low, but their parent companies are in Europe or either in Japan, and they are investing in India. So one of the company is called as Insilico Limited. It is a very small digit share, and it is into silica gel, and other is UK in India. The parent is in Japan. So they are into hydraulics, and they are serving hydraulic machinery and defense components. So means I need your opinion ki should I wait for the investment so that they can show some significant improvement in their performance, or I should take a risk since they are an MNC? No. You can avoid. It is a 400 rupees stock, which Yes. went up to 4,000-5,000. That was cornered by one mutual fund, India Bull. I don't know what's the rate now, but it's a very mediocre company. And as far as possible, don't invest in Japanese company ever. Never. In Silco, I'll have a look and I'll let you know. Okay, sir. Sir, and one question can I ask? One more? अरे 10 पूछो ना यार. पूछो. Sir, नील जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। okay, but do
you feel that till Me- Karnataka election result, the market will cover up and reach that highest point, and then after the result, it may again crash thoroughly? एक काम करता हूँ नील, I will ask my astrologer tomorrow, and I will let you know. ठीक है, jokes. Okay, Yeah. thank you. Thank you. या परमिंदर जी, परमिंदर डेसी, स्वागत विद्यानाथन. Hello, Sharad sir. Hello. Sir, sometime back you said a stock called Fosaco. How is it pronounced, sir? How is it spelled, sir? FOSCO. Okay, sir. FOSCO. FOSCO. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thank you very much, sir. स्पेलिंग पूछता है मेरे को, नॉनसेंस, दिखता सर नहीं है। लास्ट टाइम सर कमिंस का स्पेलिंग मैंने बोला था. ऐसा बस. हाँ, Sorry, ये sorry, जो sir. कमिंस है ना, कमिंस इंडिया, वो एकदम क्या बोलता है, स्लो कंपनी था, कुछ नहीं करता था. अभी क्या हो गया है, 1.5 साल से यूएसए में स्ट्रेटेजी चेंज हुआ कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, उनके 8 प्लांट्स है वर्ल्ड ओवर, उधर डालने का. तो इंडिया का शेयर ज्यादा है. ह्यूमन्स इंडिया, वो 24 तारीख को रिजल्ट, उसके बाद में बहुत बढ़ेगा लगता है. वो 40,000 करोड़ मार्केट कैप है, 1-1.5 लाख करोड़ हो जाएगा, पक्का होगा. हाँ भाई बोलो. और परमपाल सिंह सहाय. Yes, sir. Thank you for giving me the opportunity, शरद जी. आपके स्पेस काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, और मैं भी एक इन्वेस्टर ही समझता हूँ अपने आप को, और अच्छी कंपनी एमएनसी वगैरह में, लाइक मैं टाइड वाटर, बॉश लिमिटेड, और कमिंग्स या सीमेंस और एबॉट ऐसे ही रखता हूँ. शेफलर में बस ट्रेडिंग के चक्कर में मेरे हाथ से निकल गया, फैग जो था अपना बेरिंग का, बस कभी नहीं ले पाया उसे मैं दोबारा. तो आपके पास एसके बेरिंग ले लो. कौन सा सर? एसके बेरिंग. हाँ सर, वो भी है मेरे पास सर. वो लॉट का है ना, वो स्मॉल नहीं, एसकेएफ नहीं, एक एसकेपी बेरिंग है सर, वो माइक्रो कैप है, मैंने वो बेरिंग लिया हुआ है. आई डोंट नो इफ यू नो. हाँ एसकेएफ या के भी था सर इंडिया मेरे पास. मैं बात सिर्फ आज ना पीआई इंडस्ट्री ने जो उसका आर्म है पीआई हेल्थ, उसने 2 कंपनी जो है, एक यूएसए का और एक इटली का एक्वायर किया है. तो उसके बारे में कुछ है आइडिया सर? मतलब काफ़ी 4x की उस पे किया है उसने, कुछ महंगा भी नहीं लिया. तो उसके बारे में जितना मुझे स्टडी किया, मुझे तो ठीक लग रहा है. आपका कुछ इस विषय में कुछ है कुछ? नहीं, आपको ठीक लगता है आपका स्टडी के हिसाब से, और आपने जो बात किया उसे समझ में आता है कि आप मंजे हुए इन्वेस्टर हो. सर मंजे हुए इन्वेस्टर तो ऐसा सर, मुझे एक पता नहीं किसी की किताब में ध्यान नहीं कौन सा फॉरनर का था, उसने कहा था जो चीज तुम यूज करते हो ना प्रोडक्ट, इसका मतलब देख के करते हो कि वो अच्छा है तो वो खरीदना शुरू कर दो. सर मेरा 2 साल पहले हार्ट का वो हुआ, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कौन सा स्टंट लगाया, कहता है अबॉट का लगाया. मैंने अबॉट इंडिया ले लिया था. हम तो ऐसे है. वहाँ यूएसए में देख रहा था 3M की इतनी सारे प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए, मैं इंडिया में आया 3M इंडिया ले लिया. मुझे कुछ पता भी नहीं, ये वो वगैरह इतना है कि प्रोडक्ट इतने अच्छे प्रोडक्ट है सर. मैं वहाँ पे एग्जीबिशन लगाया था, ऐसा स्ट्रॉन्ग टेप था कि टेप के साथ मैंने लोहा जमीन पे चिपका दिया, उखड़ा नहीं वो. तो भाई साहब, हाँ जी, आपने ये स्पेस में आप कभी आए मालूम नहीं है. और मैंने बोला था कि
दो ही चीज देखने का है, प्रोडक्ट और मैनेजमेंट, बस। हाँ सर, वही सर। सर अभी तो काफी 10% ऑफ पोर्टफोलियो अपना यूएस से इन्वेस्ट कर दिया सर। एप्पल ले लिया, मेटाफोर्स ले लिया सर। अब इंडिया का तो इनका तो मुझे जो ऑडिटर्स हैं उन पे भी शक है। ये जो बैलेंस शीट भी क्राफ्टेड करते हैं। अब तो मैं कंपनी ढूंढ रहा हूँ, जैसे अब कभी भी बढ़ता है बंधन बैंक तो मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ, मैं उसको बेच देता हूँ सर। और एक वो रत्नाकर का क्या आरबीएल जो है सर, वो ये दोनों तो वो है, उसकी कॉल बेच के बैठ जाता हूँ सर। पोर्टफोलियो है अपना, मार्केट ऊपर जाएगी अपना पोर्टफोलियो इनसे तेज निकलेगा। तो ऐसे एक दो अब किधर से हो भाई? दिल्ली से सर, न्यू दिल्ली। तो व्हाट्सएप है मेरा, आप कांटेक्ट करो, अच्छा है बात करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू गिव मी, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Parminder ji, if you can unmute the mic. नितिन Nitin Jain ji. नितिन जैन जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैंने तो शायद दूसरी या तीसरी बार आपको सुनने ज्वाइन करा है, बट हाँ जब भी सुनता हूँ तो गुड नॉलेज ही मिलती है सर। मैं ऐसा कोई अभी मतलब स्टार्ट करी है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, प्लीज कुछ ऐसा सजेस्ट करें ताकि 10 एक साल में कुछ कमा सकें, कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और कितना डालना है सर? ₹1,00,000। हाँ? 1 लाख। हाँ, तो मेरी टाइमलाइन पे बहुत सारा लिखा है स्टॉक्स, ले लो। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. So we don't have anybody else now. No, sir. Wouldn't want. Srini is there, na sir? Srini. नहीं, वो श्रीनी को लास्ट में ग्रैंड फिनाले के लिए। हाँ आया परमिंदर, बोलो। अरे हाथ ऊपर करते हो, अनम्यूट करो ना माइक को, माइक अनम्यूट करो। ये कहाँ पर दिख रहा है सर आपको? कौन? किसने हाथ ऊपर किया है? ये परमिंदर ने भी किया था। मेरे को तो नहीं दिखाई दिया, पता नहीं कुछ एरर है मेरे यहाँ। ओके ओके श्रीनी, ओवर टू यू। अरे मीटिंग। आप बोलिए पवन। Good evening, Sharad sir. गुड इवनिंग Sir, I have a question on gold investments. So, what is the best way to invest in gold? Should we buy stocks like Titan or should we invest in gold ETFs like Nifty Bees? गोल्ड ETF। Okay, thank you, sir. ED Srinivasan. Srinivasan ji, Dabur special results for Dabur comments. No comments. I made some notes. So Samarth bhai, I heard you earlier. My dinner kha raha tha, so I couldn't respond. And then Sharad bhai was in flow, तो तब तो बिल्कुल नहीं interrupt करना था. So one is, so I made some notes, so I won't take too much time. But one is, Sharad sir, you're a class act. तो 2-4 दिन पहले ही आपने वो market manipulation का spaces किया. And just last 2 days, we saw this circus with the Hadbadi twins. I'm going to call them the Hadbadi twins now. Respect ja raha hai. Because these are mega caps in the Indian context. Even a Banana Republic stock market regulator would have, started making some comments. Ki ye news kisne phailaya, vagera, vagera. Of course, India, we have the advantage of not having a stock market regulator. Truly a free for all market. So, but sir, आपका वो, and just for everyone's benefit, the space was maybe this week only. It's a just fast forward to what Sharad sir was speaking towards the end. It's a classic piece. I think वो एक किताब बन जाना चाहिए by itself. It's actually what they don't teach you in the books. So that is one thing I wanted to just point out.
Samarth bhai, I'm going to give an indirect reaction to your question, which is since the topic was PE ratio, things are way more expensive than they look. So at a very macro level, somebody made a good point about 2004, 2006, 10, 14, whatever. The stock market to GDP ratio is actually much higher than history because उस टाइम पे 20 साल पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ा था हमारा एंड वो लास्ट डेकेड में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया या बहुत कम हो गया. So actually things are even more expensive than they look at a macro level. At a micro level, these are the patterns I have noticed in and you can match them Samarth bhai to different companies in the results. Number one, massive channel stuffing has happened. वो अप्रैल सेल में दिख जाता है क्योंकि वो रिजल्ट तो अनाउंस कर रहा है जेएफएम का लेकिन अप्रैल में सेल क्यों टूट गया फिर. Number two, there's massive channel financing going on. Third side ने एक अच्छा ट्वीट डाला about automotive industry company who has now raised more money in their credit arm so that they can finance at 100% loan to value for a product that we all know drops by 20%. As soon as you walk out with a new car or bike, it drops by 20% in value. So it's like day one, they're incurring a massive credit risk. And so things will, I'm sure, unfold later. Third pattern I've seen is a lot of costs, instead of being like booked in the same quarter or the same financial year, are being amortized as capex, and therefore the margins and all are looking better. आपने notice किया होगा, some guys are saying margins have improved, though volume is not good, revenue is not good, but hope रखो, ये सब बकवास है. Fourth similar pattern is revenue growth. Either some companies have said they have launched international, some companies have said they have launched in some new categories. What they are clearly doing is they're underpitching the cost. So, for example, if you walk into a US market and you're operating in the jewelry market, essentially you've signed up for a $5-10 million spend a year for the next 5 years. Whereas they are saying the $5 million spend of this year is amortized over 5 years. So it's and next year लोग भूल जाते हैं ये सब, उनको पता है हमारी मार्केट कैसी है. So next year they'll give some other story and never got caught. But my main theme was things are even more expensive than they look. So that was one point. Sharad sir, I had a few points on MNCs, if you permit. Why should we prefer MNCs? Yes. So if there's a category of companies I've clearly slammed by saying they're more expensive than they look, and they already look very expensive. Now this MNC obsession, I mean, just for general consumption and feedback, how do MNCs operate? Number one, their bar for doing things is higher. तो वो 54-58 प्रोडक्ट फालतू का इंक्रीमेंटल आइडिया वो ग्रीन लाइट होता ही नहीं है. दैट टू ना इंडिया टाइप ऑफ मार्केट तो वो करने नहीं देंगे. Secondly, like we saw this product, a brand which is a very popular brand, I'm very shocked. It's now become 50% sugar and it operates in the alleged health category. These things can't happen in a well-run MNC because, for example, ABB, they won't let India do any stupid thing with their product because they'll say, "Hamara global brand image is at stake." So that's another big thing you're paying for, that the global parent will prevent this kind of kachada. Second point is the management structure is very counterbalanced. So, for example, I've spent my entire career, most of my career with Coca-Cola, I'll give it, this is public information, so I'm not revealing some corporate secrets. Currently, the global CEO is British. Yeah, American company, but global CEO is British. Indian CEO is Desi. बट वो 10 साल एक यूरोपियन कंट्री में, फिर 2 साल वियतनाम में और 5 साल चाइना में रगड़ के आया है. The bottling counterpart he deals with is Brazilian. So what happens in meetings is eventually only substance can win, and there is no unlike there are some high-flying Indian companies where the leadership team is essentially sorry, I'm being blunt, either it's some Tambram cartel,
South Indian cartel, Gujarati cartel, Panju cartel, Bengali plus Panju plus South Indian cartel. So there is complete homogeneity of views, and there is a huge bias to maintain the relationship. कि अच्छा वो बुरा मान जाएंगे तो मैं मूर्ति जी को ऐसे बोल देता हूँ, आखिर यही तो मेरा मेंटर है. So this crap doesn't go on in these MNCs. The other flip side is the India plan gets done very thoroughly. So ABB, and I'm shocked, I've discovered recently, they've totally revamped their product line, their tech. ये होता है क्योंकि they create a strategic plan. They think through the financing, कैसा आएगा, कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, मार्केटिंग की बैंड बजाई जाती है कि कंज्यूमर डेटा लेके आओ, पायलट टेस्ट करो, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड फिर वो प्लान एक बार शुरू होता है, वो चलता रहता है. कोई आए जाए, श्रीनिवास मूर्ति गेट्स फायर्ड, Samarth gets hired, plan will continue. Unlike in Indian companies, if Srini goes and Samarth comes in, then it's like, oh, Samarth says, I think we should do this. फिर सब लोग yes sir, 3 bags full sir करते हैं. So that's another big advantage these guys have. The other is, I think it doesn't get appreciated because they don't show it, but on almost all parts of IQ of the business, global talent works. So if you see the Apple Store launch, I mean, I know for sure, like some of the best global thinkers would have said, how should we do it? Kahan store dalenge, etc., etc. Versus when an Indian retailer opens yet another retail outlet. Trust me, some very modestly paid guys with minimal experience are working on that launch. And the last and I feel most important part is in these MNCs, we used to laugh at the global auditor saying वो आसाम आंध्र प्रदेश के बीच में फर्क समझते समझते उसका 4 दिन निकल जाएगा. Treat the Indian auditor with fair amount of disdain कि तू क्या कर लेगा, we are so taped up. But when the global internal auditor used to come, हम सबकी फटती थी. So these guys run massive internal audits. वो कुछ नहीं छोड़ते because they don't need to disclose results to stock market. So they make sure it's like 1000 house cleaning happens. वो 2 bucket कूड़ा भी नहीं जमने देते. Unlike Indian companies, where as the same guys rise in ranks, and you're seeing that happen in some of the big IT names, some of the big FMCG names, the same guys have risen in ranks, and जो वो burning issues है वो दबाते जाते हैं क्योंकि वो बंदे senior होते जा रहे हैं. And then finally when they leave, suddenly things start coming out. So these kind of nasty surprises don't happen with MNC outfits. So this in a way is why market prices them much higher. That was my take, sir. Srini, Yes, sir. two things you missed out on MNCs. Yes, sir. First of all, there is no local promoter. हाँ सर बिल्कुल. The promoter is based outside, and there also it's not a family-run business or a group-run business. It's a conglomerate whose ownership is undefined. So nobody wants the stock price to go up or down. They are not bothered. Secondly, as you mentioned, the processes, say, for example, curcumins. Now, the processes would be the same all over the world. So there is homogeneity in processes, and let me tell you one thing, Srihasan. I don't have too much knowledge about these companies. Yes, I have a fair idea. Now, to own those shares, why should I get into too much of detail? आदमी अच्छा है ना, product अच्छा है ना, चलो ले लो. बस. That is the criteria. And I advise everybody to follow the same. Simple रखो, प्रोडक्ट देखो, मैनेजमेंट देखो. फिर अभी कोई आया था कि ये
MNC ऐसा मिल रहा है ना, अरे काय को मगजमारी करता है। और मेरे पास में कौन सा 10,000 करोड़ की सोचना पड़ता है। जो भी है 8 कंपनी है, बहुत हो गया, हैप्पी हैप्पी। एक इंडियन कंपनी है वेस्ट लाइफ, लोग समझते नहीं है। वो ठीक है, जाटिया का कंपनी है वो, पर वो जाटिया इज ओनली क्या बोलते हैं, इज अ स्टूज। द कंपनी इज रन बाय मैकडोनाल्ड USA। अभी इसका भाव क्या हो जाएगा किसको मालूम यार। मैकडोनाल्ड मिलता है, फिर वो देवयानी है। देवयानी आई डोंट लाइक, बट आई लाइक मैकडोनाल्ड्स। अच्छा, अभी रिजल्ट का बात, अभी सॉरी, ये जुबिलियंट फूड विल गिव अ नास्टी नंबर। फरवरी मार्च में सेल्स बहुत कम था, कैश ब्रेक इवन भी नहीं हुआ था। फिर आज यूनाइटेड ब्रूवरीज का आया, 79% ड्रॉप इन EBITDA। How much? 79, and the price went down by 30 rupees only, or 20 rupees. This is, ये चालू हुआ था यूनाइटेड ब्रूवरीज 100 रुपये से, ये 120 रुपये से 2008-9 में, तो 500 तक तो आ ही जाएगा। एंड अनदर थिंग इज McDowell, they will report not so good numbers, वो पिट जाएगा। या यस Srinivasan. No, absolutely, sir. Absolutely. Now you speak for 10 minutes on Dabur. And then Dabur में दोस्त है sir, मैं I won't. I'll recuse myself. Very good friends in the top jobs. नहीं नहीं, सी दोस्ती अपनी But जगह पे है। हाँ, but yes, but कम आपने opinion पूछा, मैं कुछ तो बोलूंगा, रहा नहीं जाएगा नहीं तो। No, Dabur is reflecting the Indian economy very well. Whatever we might say about their products or management or whatever, actually they've been quite good till now. So they are reflecting the early signals of the Indian economy struggling. So the bottom is falling out of the bottom or middle class, and it is. I think the white collar economy has now officially entered recession in my mind. तो जो unsecured lending है, ये वो सब वो dangerous दिख रहा है. No, but at 100p, is it sustainable, Dabur? So I think there, if I had to, and this I'm free to, I'm not on a project with them. I think fair earnings growth, like somebody was talking about PEG and all that, fair earnings growth would be what, 10%, 15% over 5-7 years. So at some point, this PE will, the price will converge towards the PE, or the PE No, will converge towards the price. no, 100 is not sustainable, I mean, simply put. no. I think you better not speak. You are fumbling. नहीं sir, नहीं, simple answer है sir, the P's are quite high. People are thinking the growth will come back. Actually, that's what I want to say. This is the new growth trend for consumers, and people are mispricing all consumer stocks. And your neighboring state, what do you see the election results? अगर free fair election है तो incumbent will be out. Okay. आपण
ईवीएम टेम्परिंग का चांस है क्या अभी? बिल्कुल सर. All tech is eventually hackable, and there are these some 12,000 missing EVMs that everyone is very paranoid about. That's it. Yeah. Who's next? Vernon. Yeah, hi Samant. Hi Sharad sir. Good evening. Good evening. View on Sapphire Foods. They are also in the QSR space. I've been tracking that growth has been good from the time they have listed. Also, profits at that time versus profits now, while they've come off a bit, but the top line has been growing consistently. So just wondered if you have any view on that. Pizza Hut, na? It has KFC, Pizza Hut, and Taco Bell. Okay. And it's quoting at what price? Around 12.90. Is there only it hasn't moved down at all. Yeah, price has not moved much. It's only a time correction, but results have been much better than what they were at the time of IPO. It went 100 in between. Now I think it has recovered last 3-4 weeks. I don't follow it much, but my bet is on Westlife. But this chain is also good. Yeah, like Westlife also. Westlife has a duopoly in the McDonald's franchisee. Here also they have a duopoly along with Berman Hospitality. So No. They are very. No. Only point you are missing is McDonald's is huge. McDonald's US is huge. So the chances of continuity and support is quite high. I'm not saying it won't be in Sapphire, but I have a concern for the promoters also. Sapphire is in the same league as Varun Beverages, and the metrics of Varun Beverages are much better. Promoters are same now. Promoters are also same, I think. Sapphire and Varun Beverages. But Varun Beverages, the P ratio, PEG ratio, everything is much better than Sapphire. Much better. No, but if उसका भी वो Pizza Hut the, है. Sorry. But if the promoter is the same, तो Sapphire को वो 5,000 कर देगा 100%. Promoter same है ये मालूम नहीं है मुझे. But because you all are saying so, I don't know. It is RJ Corporation है. Vernon. RJ Group. Promoter same है क्या? हाँ, RJ Corp है. Yeah, correct. So in Varun they have Pizza Hut, KFC, Cream Bell, and Costa Coffee. Yeah. Right. Yeah. And in Sapphire, KFC, Taco Bell. Yeah. Sapphire. अरे Vernon. वो अच्छा investment है. Yeah. US or anything good. Yeah. ठीक है sir, thank you. We'll evaluate that. Try to invest a little. बोलिए फैक्ट फाइंडर. आप आए बाहर आए. Promoter holding. Fact finder, not talking. Monil. Oh, okay. Monil Shah. Yes. Good evening, sir. Bye. Good evening, Samar sir. Can you hear me now? My question was Yeah, just a moment. Fact finder, just a moment. हाँ मोनिल भाई बोलिए. Yeah. So I have two questions. So as you earlier alluded to the commodity index,
So as you told that the steel producer companies are going to be having a very tough time going ahead, having regard to the commodity index. So your view on the companies which are, for whom the this steel is a key raw material. And the second question was that when we compare the Indian markets with the US market, so what do you think, like, does interest rate differential play a significant role in the calculation of PE ratio? सोचा नहीं है यार मैंने, बट इंटरेस्ट रेट इधर कितना है, 7% है, उसमें Correct, से इन्फ्लेशन निकाल दो तो 2-3% ही है ना, किधर है यार? correct, sir. So does a high interest rate mean कि the valuations यार are? मैं क्या बोलता हूँ, इन्वेस्ट करने का है ना, प्रोडक्ट देखो, मैनेजमेंट देखो, फिर तुम वो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ना, इधर क्या हुआ ना, और काय को सोचता है, गाना सुनो उससे अच्छा, काय को दिमाग लगाता है इतना? But sir, buy at any दिमाग price, it लगाने से doesn't पैसा achieve नहीं always. बनेगा, दिमाग लगाने से पैसा नहीं बनेगा, सिंपल आइडिया से ही पैसा बनेगा. एंड डोंट मिक्स अप, ये सब टाइम पास का बात है, इंटरेस्ट रेट ये वो फलाना ढिकना फेड ये वो, क्या होता है, कुछ नहीं होता है. जो चीज होने वाला है वो होते ही रहेगा. इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो. मुनील भाई, अगर आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर देखना है तो सिर्फ और सिर्फ बाल्टिक ड्राई सी इंडेक्स देखो बस. Okay. उसके अलावा कुछ मत देखो. बाल्टिक ड्राई सी इंडेक्स गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा. Sure. And sir, that the commodity index, your view on the companies which have a significant portion of their raw material as a steel. उनका रॉ मटेरियल प्राइस कम होगा, सेल प्राइस भी कम होगा. Okay. ये जैसे टाटा केमिकल है, बराबर है. Correct. The company reduce rates by 4% अभी 15-20 दिन पहले. Correct. At the same time, the prices of coal have gone down to $180. So you think it will benefit Tata Chemical, but in fact, it will hurt them more. और ये एक कोल अगर $120 हो जाएगा तो टाटा केमिकल 400 पे आ जाएगा, और पूरा टाइम ये 200-300 से बढ़ता नहीं था 2020 तक. ये तो पता नहीं ये पागल लोग ने आके इतना बढ़ा दिया. So I don't know what I was saying, but this is a fact. Okay. So you mean to say the margins are going to be same irrespective of the steel prices? No. The margins will come down. If steel prices come down, the prices will come down. Okay. So it is margin will dilute. Okay, sure. ये जनरल बात है, हम भाई जनरल बात है. Yes, sure. फिर पकड़ना मत कि ऐसा बोला था ना, ऐसा किया था. नहीं, got a point. Yeah, friend. Hi, how are you doing? Good. So, no, I was just listening to the conversation. I also put out a tweet just now about ABB and Siemens. I just, basically, I think, I wanted to just say that the reason why stock returns have been great is not necessarily because of, high growth.
I think it's simply because lack of choice, high corporate governance, high technology, benchmarks, and moat, and very little float, basically. So I just wanted to add that. Secondly, I think somebody mentioned a mistake. Sapphire Foods is not RJ Corp, which is the same as Varun Beverages. Sapphire Foods is the competition to Devyani International. Devyani International consists of KFC and Pizza Hut in certain parts of India, while Sapphire Foods covers the other parts of India for the same brands. And maybe they might have a Popeye or a thing. So the two, actually, Sapphire should be compared to Devyani International. But Devyani International is a part of RJ Corp, which is the same promoter as Varun Beverages. So Devyani is 174 today because I check the prices every day. I think 2-3 साल में 500-600 हो जाएगा. Yeah, I'll tell you one thing. Because Let me. My personal view is. See, pizza is an extremely high competitive market, and it's primarily delivery, right? If you look at, I was involved, by the way, in the IPOs of Devyani, Sapphire Foods, as well as Varun Beverages. Okay, my understanding is that I would more bet on a burger company because. While generally high ROE can be a delivery company, I agree with you. Delivery companies, if they're really good, they can be very high ROE, which is essentially what pizza is all about. But then also there's very limited moat, right? While brands like McDonald's and Burger King, they have very, very strong moat because of the brand value. In my view, I would bet more on a burger company like a McDonald's and maybe even a Burger King. I think if you should probably look at Burger King because the valuation they almost have as many outlets as that of McDonald's, and the difference with McDonald's, which is Westlife can only operate in the south and the west of India, while Burger King can operate in any state in India. So they have the entire country for themselves. So if you're looking at long-term investment, you should study all of them. But these are the differences. I'm not making any recommendation, but these are the differences you need to understand. That Westlife has only limited territories. Burger King has the entire country. Domino's obviously has the entire country. Sapphire has only half the country, and Devyani has only half the country. हाँ भाई, कोई बोलो. Shail Pandey. हेलो. हाँ जी सर. नमस्कार सर. सर मुझे जानना था कि जो ये आज इसके अडानी एंटरप्राइज के रिजल्ट आए हैं, उस पे आपका कोई राय, कोई दो टूक हो आपकी? बताते हैं कि डबल हो गया प्रॉफिट, ये हो गया, तो वही सब जानना था कि इसमें रियलिटी कहाँ है और बाकी आपका कोई राय. ये जो है ना, ये जो रिजल्ट, ये सलीम जावेद की कहानी है. समझना है वो समझ लो. सेठ जी 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, 2-3 हजार करोड़ का प्रॉफिट है, मींस 2 to 3% इज द ऑपरेटिंग मार्जिन. लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रहा था 10%, 12% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रहा था. अब भाई साहब,
आपके पास है क्या, शेयर है क्या? नहीं, मैं तो सर इसमें वैसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी कभी कभी देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं डेट फंड में डाल। तो छोड़ो ना, अच्छा कंपनी का बात करो ना यार। हाँ सर, नहीं मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी में देखता रहता हूँ, जो आप बताते हैं ना, जैसे एस्ट्रल हो गया और ये सब हो गए, तो उनको रडार में डाल के थोड़ा देखता रहता हूँ, कभी सेलिंग का मौका मैं देखो बोलता हूँ, जो भी 10% घटे ना, उसके बाद में बेच देना। ओके, अच्छा सर, ठीक है, शुक्रिया। वैसे मैं वही देखता रहता हूँ, शुक्रिया सर। ओके, और डाबर बेचो, डाबर। अच्छा सर, ठीक है। वो ABFRL बेचा था, उसमें थोड़ा कमाया है, बेचता हूँ तो फिर डाबर को भी। भेजो पैसा, भेजो पैसा, भेजो। पैसा सर इनकम टैक्स पे कर दिया, मैं अगली बार भेजूंगा थोड़े दिन बाद। Yes, who's next? Abhi. Yeah, Rama here. Sharad sir, good evening. Samarth bhai, good evening. Good evening, sir, actually I wanted your view on Sona BLW. Bogus company. Really bogus company. Okay. कचरा, अच्छा, डंप यार्ड, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल दो उसको। Okay sir. Thank you. But it makes me wonder, why do you veer towards such names? Why people are not going towards quality? सर फॉरेन कंपनीज या MNC कंपनीज का कोई प्रमोटर ହିସାବ କହିବ ତୁ ପୁରା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଫୁଲ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲିକିରି। हाँ ହଁ MNC कंपनीज का कोई प्रमोटर जी बिजनेस के CNBC पर नहीं आता सर, इसलिए नहीं पता होता किसी को। सोना BLW का वो प्रमोटर आता रहता है बोलने के लिए, जैसे मदरसन का आता रहता है CNBC के ऊपर। चलिए, who's next? अभी तो और कोई नहीं है सर। क्या बात कर, आपके पास रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी, देखो। वीप से ये अभी कर क्या है? वो अभी बंगाली में बात कर रहे थे। अविनाश बोलिए सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन फैक्ट फाइंडर से है। आपने हेलो, एक मिनट रुकिए अभी भाई। हेलो, अरे रुकिए ना अभी भाई। हाँ बोलिए। कौशल। हाँ, कौशिक भाई बोलिए। आपने बर्गर किंग के बारे में बोला, तो उस ने जो बाहर की मतलब बाहर के देश में उन्होंने अपनी ही प्राइवेट इक्विटी से इंडोनेशिया में ऑपरेशन खरीदा, तो मतलब आई थॉट दैट वाज वेरी बैड एक्विजिशन। आपको नहीं लगता ऐसा? फैक्ट फाइंडर। Yeah. I agree with you. I don't think it was a good acquisition. Absolutely. And I think it was very bad on their part to do that after the IPO. Having said that, I think that the valuation that they paid was like 1/3 the India valuation. But having said that, but no, I mean, there's no disputing it was a very bad acquisition. But the question is that, you know, as long, the markets at the end of the day, right? They look at eventually what happens. So this is obviously in the price, right? That's why the stock is so cheap, right? But see, the thing is, you got to understand. Let's look at Varun Beverages, right? Varun Beverages, trust me, no investor wanted to buy that stock. You know why? Everybody argument was it is not a consumer company. It is a bottling company. It doesn't own the brand.
Coca-Cola, Pepsi tells them what price to price it at. How much is their profit margin? If you notice the profit margin of this company, Varun Beverages, it's very, very steady at 20-21%. But the price of your Coca-Cola and your Pepsi keep going up and down a lot. Like, for example, if you look at the results of Coca-Cola, the price of Coca-Cola has gone up 15% worldwide, including Asia, in the last 1 year. Right? But the margins have remained generally steady. So the point I'm making is that this company has no pricing power because Coca-Cola, Pepsi decides what price they price it at, what margin the company earns, or how much advertising they spend. Everything is decided by Pepsi. Nothing is decided by Varun Beverages. So then the question everybody said is that it's not a consumer company because it doesn't own a brand. It is just an outsourcing company. Right? So for a long time, people did not believe in it. And eventually, the stock has now become one of the best performing stocks in the last 3-4 years. Right? Simply because the company delivered on volume growth and people just immediately forgot about the same arguments that they were against it. Likewise, Burger King obviously did a very bad thing for in Indonesia. The question is, do you believe that the burger story, which is the McDonald's story, will continue to grow in India? And eventually, will such companies like Devyani, or I mean, like this other company, what's that? Westlife. Will Westlife continue to succeed? Which means that the burger as a segment of the industry continue to succeed. Then if that is visible even in companies like Burger King, eventually people will focus on that. That's the point I'm trying to make. Thank you. The latest on Burger King is that they're going to close 400 locations in the US 2 hours back. I don't think it affects I mean, India. Okay, No, I'm I'll just give you a saying. very interesting data point. Okay, Starbucks. But this Burger King is an independent company or part of No. Westlife? No, Burger King is an independent company called Restaurants Brands International. It owns both India as well as Indonesia. But No, in India, what's the name of the yeah, it's stock? called Restaurant Brands Asia, Restaurants Brands International. Burger King is the name of the stock. No. Burger King is not the name of the stock. Nahin, I found it. I can't The find Burger it. King is not the name of the stock. It's called Restaurant Brands International or Restaurants Brands Asia. By the name is Restaurant Brands, but the ticker is Burger King. Yes, you're right. Okay. So, but no, I'll give you guys a very interesting example that I read today or last couple of days. Starbucks is adding just in China 9,000 outlets. Okay, in China, I think this year 9,000 outlets. Okay, just for perspective, India, Starbucks has only 333 outlets till date. Just 333 outlets till date. And in China, they will open 9,000 outlets. Okay, just think about the scale. Eventually, if India becomes rich, then we'll also have scale. मेरा एक और इसी के बारे में आई वांटेड टू आस्क समथिंग. अगर आप ये जो ओ कैलकटा और ये सब जो वेस्ट बंगाल की कंपनी है, दे हैव स्टार्टेड क्लाउड किचन एंड उनका काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गया है बिजनेस. सो डू हैव अ व्यू ऑन दैट एज वेल? पहले वो काफ़ी लॉस करते थे. I don't have a view. Sorry. सर एक बात बोलूं आपको. हाँ बोलिए. अब ब्रांडेड आइटम का बात करो ना, अच्छा लगता है. ये सब कचरा पट्टी का इंटरेस्ट नहीं है हम लोग को. वो कभी आएगा 2 साल में बंद करके चला जाएगा. नो थैंक यू. आई समझ गया. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर ये सब क्या आते जाता रहता है.
बट स्ट्रक्चरली बर्गर्स 55-60% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है और पिज्ज़ा 75% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है, तो मतलब स्ट्रक्चरली ही पिज़्ज़ा बेटर बिजनेस नहीं है? मतलब इन जो भी आपका मतलब ऐसे जो स्ट्रक्चरली एक अगर आप 5 साल 7 साल से हिसाब से सोचो जैसे आप बोल रहे हो, तो एक जिसका ग्रॉस मार्जिन 75% है, भले उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, बट आज की डेट में डोमिनोज का ग्रॉस मार्जिन है 75%। इवन जो अनलिस्टेड कंपनीज है लापिनोज, इन सब का भी है 71% पर ये जो ब्रांडेड बर्गर कंपनीज हैं उनका भी 60, 62, 64% ग्रॉस मार्जिन है। तो मतलब ये क्या पहुंच पाएंगे कभी 70%? सर ये जो आपका परसेप्शन है ना कि 75% मार्जिन है, ये रिजल्ट आने दो मार्च क्वार्टर का, यू विल रियलाइज व्हाट इज व्हाट। Yeah, fact finder. No, there was something I wanted to say about. I forgot now. I'll come back. Yeah, Saurav ji. Saurav, it's Sniper Trading. सर मेरा फंडामेंटल व्यू चाहिए था, एक कंसिडरिंग 3-4 years, कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट। Anybody or I can answer? नहीं सर, मैं बोल देता हूँ सरोज जी, 50% से 25% हो जाएगा या करंट भाव से। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। Yeah. अमित मल्होत्रा। नमस्कार शरद भाई एंड समर्थ भाई। नमस्कार सर। शरद सर, जिलेट इंडिया पोर्टफोलियो के लायक स्टॉक है, मल्टीप्लाई करेगा अगर इसको रखते हैं तो? नहीं करेगा। पेरेंट को रखो ना अमित जी, पेरेंट को रखो ना। ठीक है सर, थैंक यू। रखो। हाँ जी, जिलेट के पेरेंट को रखो। अच्छा, पता है ना क्या? थैंक यू सर। अमित जी पता है ना नाम? पीएनजी सर। हाँ बस, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो और कोई नहीं? सर अनंत सर। वेलकम। थैंक यू सर, मैं तो अभी आया हूँ, कुछ सुना भी नहीं, क्या बात चल रहा है डिस्कशन? नहीं, आपके काम का नहीं है, आप अपना चालू करो। मेरे काम का नहीं है? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं साइलेंट बैठता हूँ। ओके, सुनता हूँ। नहीं, आप बोलो ना। हाँ। जो भी बोलना है। अरे क्या बोलना है? वो वही है जो फ्राइडे से बोल ही रहा हूँ, करेक्शन एक्सपेक्टेड है बस, और कुछ नहीं। और कुछ एक्सपेक्ट जैसा है वैसा चल रहा है, बराबर ही तो चल रहा है। देख रहा हूँ, मेरे को 17,600-500 दिख रहा है। वो फ्राइडे को ही बोला था ना, एक दिन कल सेटलमेंट की वजह से ऊपर गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं। बस ठीक है सर। मुकेश गोयल। गुड इवनिंग जेंटलमैन। एक्चुअली मेरा एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पर थोड़ा व्यू चाहिए था 3-4 साल के लिए, मतलब कुछ हिल ही नहीं रहा है, क्या हुआ है पता नहीं। फाइव जी हिल नहीं रहा है ना, इसलिए मुकेश जी। क्या कर रहे हैं? 5G का ही इश्यू है। It was meant on the story of 5G. See, first of all, you have to understand what is a stock and what is a stonk. Okay.
Okay. So if you are holding stocks, we can help you. If you are holding stocks, we can't help you. We don't have an opinion. स्टॉक तो है सर, मेरे पास स्टॉक है। आपको लगता है आपके पास स्टॉक है, हमको लगता है वो फालतू चीज है। ओके, ठीक है सर, समझ गया मैं, समझ गया, ठीक है। Sharad sir, what's your view on Linde India for long term? हाँ, which one? Linde Linde India. India. कई को पूछता है यार, रखो ना 20-25 साल आराम से। वेरी गुड स्टॉक। Thank you, sir. Previously it was Indian Oxygen, then it became BOC, British Oxygen, then it became Linde. Linde is number one, very big giant. So you are in good hands. ये क्या वाला है? हेलो, ये सागर जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए ना प्लीज। तो ये लिंडे इंडिया अगर आपके पास है तो रखो, और अगर ज्यादा पैसा है एक्स्ट्रा तो और लो। Thank you, sir. या सागर हेड आउट। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेरी था कि सर जैसे अभी अमेरिका में 1 by 1 जो बैंकरप्सी की जो न्यूज आ रही है, उसकी वजह से आपका क्या व्यू है सर अभी इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, थ्रू आउट द इंडियन इकोनॉमी के बारे में? नहीं, वो पहले भी मैं बोला था, ये जो 4-5 बड़ा बैंक है ना, हाँ, अपने वहाँ, ओके, they are classified as too big to fail. Okay. Okay. And the rest of the banks, there will be problems. Sir, only 3 are classified, sir. Okay, whatever. SBI, सर मैं HDFC and ICICI. सर शरद सर, मेरा खुद का परसेप्शन एक ये बन रहा है, क्या आप मुझे थोड़ा गाइड करेंगे क्या? अभी मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए उन कंपनियों के बारे में सोचूं जिनका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में है और जिनका पूरा का पूरा बिजनेस भी इंडिया में ही रन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक जैसे शक्ति पंप्स मान के चलिए, एक कंपनी है जो सोलर पंप्स बनाती है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा मोर देन 80% बिजनेस जो है वो इंडिया में ही है। सर हेलो सर, केएसबी पंप का नाम सुना है आपने? हाँ सर, हाँ। तो उसमें डालो ना पैसा, मेहरबानी करके। नहीं, ये शक्ति पंप्स भी अच्छा है वो सर। लेकिन क्या हुआ है ना, शक्ति पंप्स ने बहुत दिनों से सर मोमेंटम ही नहीं दिया है। मतलब बहुत सारे दिनों से वो 450 के नीचे ही रह रहा है, 400 से 450 के बीच में। और केएसबी में भी था सर मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा 800 रुपए से बाइंग था, 2200 रुपए पे मैंने प्रॉफिट बुक किया उसमें। तो इसके लिए मैं पूछ रहा था सर कि अभी उन कंपनीज पे फोकस करना चाहिए क्या, कि जिनका बिजनेस तो इंडिया में ही है, रादर फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के बजाय? नहीं, अगर आप ले बेच करते हो, हाँ, तो उससे अच्छा एफएनओ ही करो ना यार। अगर आप शेयर लेता है, अच्छा शेयर लेता है, हाँ, तो बेचते क्यों हो? व्हाट इज दिस प्रॉफिट बुकिंग? वो जो प्रॉफिट आया उसका क्या किया, क्या तुमने कोई कचरा ही लिया होगा? नहीं सर, मैंने कचरा तो नहीं लिया। बाय द मतलब अभी ऑलमोस्ट सर अभी 10-12 साल से अभी स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, लेकिन मैं जॉब छोड़कर फोकसफुली स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ 2019 से। तो मैं अभी सर 10 लाख रुपए से चालू किया था, लगे नहीं कि अभी मेरा पोर्टफोलियो 1 CR के प्लस में है सर। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। मैं इन्वेस्ट करने के बाद आप अगर मेरे को ट्विटर पे मेरे अकाउंट पर भी जाओगे ना, तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करते रहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आज का ही है, मैंने पॉलीप्लेक्स लिया था 1340 रुपए से।
सर बट आपने केएसबी 2200 में क्यों बेचा केएसबी आपने? क्योंकि सर उसमें मेरा टारगेट रहता है सर कि मैं 5%, 10%, 10-15 दिन में प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहता, ऐसा एटीट्यूड लेकर चल रहा हूँ सर। आपने 800 के आसपास वो 3 साल रहा, 800 से 2200 गया 8 महीने में, और आपने बेच डाला। हाँ सर, आज वैसे पॉलीप्लेक्स पे भी मैंने हफ्ते भर पहले लिया था 1340 के रेट से, और आज पॉलीप्लेक्स विद केएसबी पंप यार। हाँ, सर मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ सर, और उसमें 10-15% प्रॉफिट मिल गया तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मतलब उसी, क्योंकि सर देखिए, मतलब मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जैसे केएसबी भी मान के चलो 800, सर रिलायंस भी 800 से 2400 तक आज है, लेकिन सर वो एक ऐसी कंडीशन से निकला है कि वो अभी रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। आपका तरीका बहुत राइट है, आप लगे रहो। हम लोग को समझ में नहीं आता है शेयर बेचने का। हाँ सर, नहीं सर, हम लोग सर देखिए, मैं आपके सामने स्टूडेंट ही हूँ। हो सकता है कि मुझे अभी मेरे स्ट्रेटेजीज पर सक्सेस मिल रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो मेरे लिए घातक रहे, और आपका एक्सपीरियंस हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को फायदेमंद ही रहेगा। सिर्फ मैं सर थ्रू आउट मार्केट का परसेप्शन आपका समझना चाहता हूँ सर। ये दो साल जो आप पाए ना बाजार में, हाँ, वो बाजार नहीं रहेगा अभी अगले 10 साल तक, और खूब मरवानी पड़ेगी इधर। ऐसा 10-15% नहीं मिलेगा, वो खाली। सर मैं 2 साल से तो स्टॉक मार्केट में नहीं हूँ, मैं 2007 से स्टॉक मार्केट में हूँ। मैं एमबीए के डेज से सर ट्रैक कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को, और मैंने जॉब भी इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट। हाँ, आप समझते नहीं हो, ये जो तेजी का पीरियड आया ना कोरोना के बाद, उसने ये नहीं आएगा। बिगाड़ दिया है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पीरियड की बात कर रहा हूँ। अगले साल से आप मेरे को बताना आपको कितना प्रॉफिट होता है। ये रन से टेलीग्राम चैनल सर, भी रहने दो। छोड़ो। प्रतीक जी, प्रतीक। Yes sir. Sir, I have a question regarding to मैं नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग में उसमें करता हूँ, और मुझे ये पूछना था कि जो जोमेटो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी बाइंग हो रही थी उसमें, और मैंने रिसेंटली चालू किया तो मुझे कुछ इतना पता नहीं चला जोमेटो का, और मैंने अपने कलीग से पूछा तो उन्होंने कहा कि नॉट वेरी गुड कंपनी, लेकिन उसमें लोअर लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग चल रही थी, मैं उसी पे देख रहा था। तो इसमें कोई ऐसा न्यूज़ या फिर ऐसा फंडामेंटल जो ध्यान में रखना चाहिए अगर आगे बाइंग करनी है तो? उसके फंड मैनेजर विप्स है। विप्स बाइज एट 50, सेल्स एट 55। अभी तो कभी बेचने का ही नहीं, निकल गया रेंज में। अभी तो देखो मजा क्या होता है, उसका डबल है। मैंने खरीदा नहीं था, मैं बस उसको अभी देख ही रहा हूँ, मतलब फिलहाल मैं लोअर लेवल से राउंडिंग बॉटम हो सकता है। आप देखो प्रतीक जी, 100 रुपए के बाद लेना, आप देखते रहना। और दूसरा सवाल क्या था भाई? सर यही क्वेश्चन था, मैंने यही बताया था। चलो और कोई? अरे यार, विनती बोलो। विनती वर्दी 1 2 3 4। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं 23 साल से एशियन पेंट और एडीएफसी पकड़ के बैठा हूँ, पर अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। व्हाट इज योर ओपिनियन? इतना साल तो दिया ना? हाँ दिया। और कितना साल से नहीं दिया परफॉर्मेंस? गए 3-4 साल से। तो निकाल दो। 200 का 2000 कर दिया, 4000 कर दिया, अभी बोनस भी दिया 3-4 बार एचडीएफसी बैंक में। ये क्या करना है वर्दी जी? बड़ा एचडीएफसी, नॉट एचडीएफसी बैंक। तो भी उसने भी दिया है ना बोनस, तो उसने भी दिया था। उसने भी दिया है। बट व्हाट इज द फ्यूचर?
कितना शेयर है बेच दो और मुझे भी फॉरेन ट्रिप पे ले चलो। किधर जाने का? ताइपी जाने का? हाँ, किधर? किधर भी आप बोलेंगे उधर लेके जाएंगे भाई साहब। कजाकिस्तान जाने का है, कजाकिस्तान। उससे अच्छा तोरा बोरा अफगानिस्तान जाएंगे भाई साहब। ओ, हमें नहीं मालूम। आप सॉरी ले चलो सॉरी तो। सॉरी सर, जस्ट मजाक में बोल दिया। नहीं 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 नहीं, अरे बराबर है, एकदम बराबर है। एक्सट्रीमली सॉरी बट नहीं, ले चलो हमको। नहीं, फ्रैंकली योर ओपिनियन, क्योंकि गए 3-4 साल से स्टैग्नेंट है ये लोग अरे बोगस दोनों। है एकदम, बोगी ओवर प्राइस है। ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। यस। शिवम गुप्ता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर कोइंसिडेंटली सर मेरा क्वेश्चन शरद वो अनंत सर से था एंड आई गेस ही लेफ्ट द स्पेस सर। क्या था बोलो ना सर। सर लास्ट स्पेस में सर आनंद सर ने एक बार बात करी थी दैट ही हैज फाइंड अराउंड 4-5 शॉटिंग कैंडिडेट्स एंड ही हैज शरद सर ने पूछा भी था नेम ऑफ फ्यू, सो उन्होंने बताया था कि आई हैव शॉटेड एशियन पेंट्स एंड इंडियन होटल्स। सो वहां से तो अराउंड 15-20% के आसपास रैली कर चुके हैं सर दोनों ही शेयर्स, अराउंड 15%। सो डिड ही चेंज हिज व्यू? डीएम कर दो आप। हाँ जी जी सर। और एक बात बोलता हूँ तेरे को भाई, तू जी सर है ना, अगर वो कोई रॉन्ग पड़ जाता ना जी जी तो उसका उंगली नहीं करते, चुप बैठते। नहीं सर मैं बिल्कुल उंगली करता है तू, और क्या कर रहा है तू? बेचा था क्या? सर मैं बस उनका व्यू लेना चाहता था इन सच केस। अरे लेकिन तू बेचा था क्या? शरद सर नड़िया गणित बीजू कहीं नहीं करता। हाँ, ये छोड़ना यार। विनती जी, विनती अनम्यूट कीजिए सर। चलो सर, अब कोई है नहीं स्पेस। ओके, एक डिस्क्लेमर दे दूं सर? आप दे दो, जितना भी देना है दे दो। Whatever stocks have been discussed in this. एक मिनट। शाहिल पांडे, बस अभी एक इंजन आया है। हाँ सर। ये अभी नहीं लूंगा कोई भी। हाँ जी बोलिए। शेल जी बोलिए। तो काय को मांगा? शेल पांडे बोलिए। सर आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है, बोलिए। सर जी सर ये ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के बारे में आप सर? नहीं मालूम। IOC only IOC। ओनली IOC है? यस। थैंक यू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलिए सर। यार अनम्यूट कीजिए सर। चलो भाई, जो भी है बोलो अभी। हेलो सर। हाँ जितेश भाई बोलो। सर AI स्टॉक कौन से लेने चाहिए? लेटेंट। थैंक यू सर। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके लेना, मैंने बोला इसलिए मत ले लेना। हाँ थैंक यू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इफ यू कैन हियर अस अनम्यूट कीजिए सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है चलो उनको नहीं आना है सर। और कोई? नहीं भाई नहीं, बस दे दो डिस्क्लेमर। ठीक है। Whatever stocks has been discussed in this space,
they are opinion of the host, co-host, and the speakers. So whatever judgment you want to take for buy sell, please do at your due diligence and consult your financial advisors for any further action on your portfolio or any of the stocks. We will not be responsible for any loss and profit, whatever be it, based on our hearsay. So please take the due diligence of any financial advisor. थैंक यू सर. नहीं, और सबसे बड़ा बात है थोड़ा सा अक्ल लगाना कुछ भी करते पहले. कॉमन सेंस. आंख बंद करके मत करना और खड्डे में गिर जाओगे. ये शेयर बाजार है, मतलब शेरों का बाजार है. यहाँ जरा सा भी भूल चूक हुई, आप काम से गए, नजर हटी, घटना घटी. बी वॉचफुल, बी केयरफुल एंड बी नाइस टू एवरीबॉडी. थैंक यू. मेरा भी डिस्क्लेमर है. ओके. थैंक यू.